आग लगा देंगे। यार इंडिया अब किसी से कम नहीं। मेरे बहन मेरे साथ आजा। जाएंगे, लड़ेंगे, सबकी बात लगा देंगे। आंखें अंदर, आंखें अंदर, बात लगा देंगे। आंखें अंदर, आंखें अंदर। यार इंडिया, यार इंडिया, आंखें अंदर, बात लगा देंगे, बात लगा देंगे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। बहुत बहुत स्वागत है इन न्यू गेंशिन इम्पैक्ट के स्ट्रीम में और खतरनाक गान्यू बिल्ड वाले स्ट्रीम में। रुको, कल एक चीज़ बहुत दिक्कत हुआ था, जो बोल रहा था लोग कि हमको एचपी नहीं दिखता है नीचे का, तो उसका थोड़ा शॉर्ट कर दिया। चलो अब ठीक है, अब सब कुछ दिखेगा अच्छे से नीचे का जो भी है सब कुछ। एंड मेरे पास रेजिन है 116 और बवाल एकदम डेंजर करना है आज। थोड़ा जल्दी में आए हैं और लेकिन रुकेंगे ठीक ठाक समय तक। और इवेंट करना है, बॉसेस भी न्यू आ चुके हैं वीकली वाले, तो उन सबको भी धोना है। पहले चलते हैं कमीशन करने अच्छे तरीके से। वैसे मेन आईडी में सेविंग करना है हमको कुजैनली के लिए, और कुजैनली के लिए बिल्ड जाएंगे तो रिसोर्सेज हमको चाहिए सुमेरु के। सही बात है कि नहीं? सुमेरु के लिए जाना है। थोड़ा अभी मेन आईडी में कुछ नहीं देख रहे हैं, सेकंड आईडी में ही हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गान्यू के लिए। चलिए कमीशंस कीजिए फटाफट। की हाल है रे बचवा? मारो नहीं यार। सोचे थे हाइजू बिल्ड करेंगे, हाइजू बिल्ड करेंगे, साला हाइजू नहीं बिल्ड हो रहा है, बताओ। अबे साला 6 लेवल का ही हो, सब छू देगा तो मर जाएगा। अरे माँ की आँख टूट गया ना, कोई नहीं। अरे तू तो लग जा, अबे लग जा। ला 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 ला, रुको गाना बजाते हैं पीछे। चलो ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसलिए बजेगा सुमेरु वाला। जो ओपी है। I will have order. अबे साले
हाँ हाँ, मार दे मार दे। Yeah. Ha! 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 Confess! Truth hurts! आओ आओ तुम इधर आओ। Stabilize! चलो फट गया। Fracture! Solidified! Bring it on! ये बात अब सही से चल रहा है। हाइजुआ डैमेज कर रहा है ज्यादा डिलुक्स, क्योंकि हैजू को गर्दा वेपन गर्दा सब कुछ दिया हुआ है, आर्टिफैक्ट और हाँ गर्दा तो दिया हुआ है भाई। ये कौन सा जगह आ गया? अरे अरे वाह बचवा। Stabilize! नोटी नहीं किया कार ऐसा किसी को। आइए आप लोग पधारिए। This is order. चलिए सभे मर गया। सब साफ। Add Astra. Thank you for completing. Add Astra. Gamer from Seoul. Welcome to my channel. Send. गेमर फ्रॉम सोल वेलकम स्ट्रीम की हाल चाल है? वेरी वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम। फर्स्ट हाँ भाई आज तुम फर्स्ट हो चुका है, क्योंकि आज थोड़ा लोग नहीं है। नोटिफिकेशन लगता है आज नहीं किया किसी को क्या? नहीं, नोटिफिकेशन में कुछ इशू हुआ है लगती है आज। रीजन 117 है और किसको जाएं हम लेकर ऊपर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेयर को तो आया। मेरे को तो आया। अरे जियो रे, सब ठीक है। मतलब लौंडा लोग कहीं बिजी है आज, कोई बात नहीं। रात को ज्यादा जगवा दिए हैं तो क्या करेगा, सब दिनवा में सुतबे न करेगा। तो अब सोच लिए हैं रात में होगा कम डिंग डोंग, ठीक है। ये सैंड पीस बहन चल बलाहा टाइप किसी और का दिए हुए हैं हम। मेरे पास अटैक का सैंडे नहीं है। 40 200
अब यूँ गर्दा कर रही है, लेकिन और ज़्यादा गर्दा करने के लिए वो सब चाहिए हमें। लाओ ट्रायल कर लेते हैं पहले। No, my sword. Dodge रुक this. साला 10,000 ही पे काया मारता है, वाह। Ring cutter. काया ओपी। Don't get frostbite. क्या दिया है काया को? 57, 91 एनर्जी रिचार्ज, अटैक 1300, फेवोनियस स्वॉर्ड 4 पीस ब्लिजर्ड, 888। सिर्फ टैलेंट के दम पे डैमेज जा रहा है 10,000, लेकिन इतना से कुछ होने वाला थोड़ी है। क्या Red बा? outlines your fate. 10,000 से कुछ होगा? Freeze. तुम ही बताओ। Let me weave you a verse. Oh, so sorry. No, my sword. हाँ हाँ, मार के कुल्हाड़ी चट्टा कर देंगे तो। Don't get frostbite. Ring cutter. नहीं रे, सही बात है। 10,000 से कुछ फर्क पड़ता है? जब वहाँ 100 बहन जो 30,000, 35,000, 40,000 मार रहे थे तो कुछ होबे नहीं किया। ये बहन जो 10,000 से क्या होगा इसका? नॉर्मल के मारथा टैब मजा आता। नॉर्मल 10,000 मारता तब मजा आता। हाँ ये भी ठीक बात है, लेकिन वो नॉर्मल कैरेक्टर है नहीं ना, वो क्रायो सपोर्ट हीलर टाइप है, तो खेलना थोड़ा मुश्किल है। मतलब डैमेज निकलवाना मुश्किल है। C6 होने के बाद भले कुछ हाई डैमेज का हम लोग सोचते भी। राइडन का अल्ट कर दे क्या 9? ओके, आज खुला भी नहीं है, वाह। चाइल्ड तो ट्रिपल क्राउन है, जिंक्सू भी। काया हीलर है। कब से? काया कब से हीलर है? कब से? स्टार्टिंग से हीलर ही है वो, मतलब हील करता है वो, ठीक है। नहीं पता है तुमको? देखो दिखा दे। करने गया। अरे इसका हीलिंग ये है, देखो। एवरी हिट विथ फ्रोस्ट ग्नाव रीजनरेट्स HP फॉर काया इक्वल टू 50% ऑफ हिज अटैक। ठीक है, 1 मिनट, ये तो हील नहीं है, अटैक है ये। हीलिंग वाला कहाँ गया? अबे बहन का हीलिंग वाला कहाँ गया इसका? चीटिंग। मैक्स HP बेस्ड है, ठीक है। लो। नहीं रे, हीलिंग करता है, थोड़ा मोड़ा तो करता है ये। इसका कुछ है, दम है, लेकिन हीलिंग करता है ये। फ्रोजन एलिमेंटल्स पार्टिकल्स में प्रोड्यूस मैक्सिमम फ्रोस्ट ग्नाव, यही ना इस वाला। 15% अटैक, ठीक है, रुको दिखाते हैं। Ready when you are. So sorry. Dodge this. जिंक्सू टाइप हीलर है ये।
और वह जो सही में कुछ नहीं हिल किया। What's the hurry? Cool it. रुको तो, बहन जो हम मारते थे तो हील होता था, ये क्या है? चीटिंग कब से हो गया भाई मेरे साथ? घंटा का हीलर। घंटा का हीलर? घंटा तो वो है, घंटा का एक घंटा की हीलर वो है जो हमारी प्रो गर्ल है। Freeze. Cool it. रुको, अब काया से हम हील करवा के रहेंगे। Dodge this. Freeze. Gather. Cool it. Freeze. काट GYQ। Oh, so sorry. Stabilize. हद गंदा काट दिया भाई ये तो। बहन जो पहले हीलिंग करता था ये। Dodge this. Freeze. क्या हो गया इसको? रुको रुको, किसी से पूछना होगा हमको। Dodge this. काया पे DMG लो, Cool it. फिर मारो। काया पे DMG लो फिर मारो, ठीक है रुको एक सेकंड, वो भी देख लेते हैं। चलो अब ठीक है। Solidify. Confess. Freeze. हाँ देखो हील हुआ ना। Don't get frostbite. Dodge this. 164 164 हील अपने आप को करता है ये। 181 164 This moment will be frozen in time. Freeze. जियो बहुत प्रो हीलर Dodge है। this. 164 बहुत ही प्रो हीलर है भाई, बहुत ही ज्यादा प्रो हीलर है। 164 जिसे जिंक्सुआ करता है ना वैसे ही ये भी थोड़ा बड़ा कर देता है, अपने ही आपको, दूसरा कोई को नहीं करता है। वाह फेल हो जाएगा इसके आगे। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है भाई। बेनेट को पीछे कर दिया हमारा काया ऊपी। चलिए दूगो हम जाते हैं क्रायो डोमेन में, जाएं क्रायो डोमेन में ही चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हो? अब सिर्फ पैंचो गान्यू से ही खेलेंगे। चाइल्ड टाटा बाय बाय। Time to begin work? Boba, get them! Let's light it up! I'm going in! Order guide you. No touching!
बहन चो अभी मर जाते हैं। Solidify. Born of ice and frost. अरे मर कहाँ नहीं रहा है बे। HP बेकार, सैंड पीस चाहिए हमको जबरदस्त वाला क्रायो में, तब जाके हो सकता है कुछ, नहीं तो इससे नहीं होगा। ठीक है रेशियो, हाँ ठीक है। This is order. Eat this! No touching. This is long overdue. गान्यू वंश और कैरेक्टर है, या तो मरेगी या तो मरेगी। हाँ यही दिक्कत है, तो जंगली जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। जंगली रखोगे तो इजी पीजी होगा। डिफेंस ओके, सही चीज मिला है, एवरेज पीस है, लेकिन डिफेंस अटैक के जगह एनर्जी रिचार्ज जेम होता तो मजा आ जाता, एकदम शॉट वाला मजा आता। हैंड पीस चाहिए तो हैट मिलेगा, और हैट चाहिए होगा तो मिलेगा फ्लावर। वन शॉट कैरेक्टर है, या तो मरेगी या मरेगी। चलो ठीक है, 1 2 3 1 2 3। हाँ मैं डियोना रखूंगा, क्रिट रेट प्लस 15%। डियोना, डियोना में कौन सा जादू आ गया? शील्ड विल्ड का है थोड़ा सा प्लस, एलिमेंटल मास्टरी मिलता है 50% से ज़्यादा होने पे। ये योइमिया के लिए बेटर है, मतलब डियोना योइमिया के लिए बहुत ही मस्त है। वैसे जिसके पास जोंगली नहीं है वो कर सकता है इजी पीजी। 2 क्रायो पे 15% क्रिट रेट। 2 क्रायो पे क्रिट रेट। वो भी ठीक है। आयाका प्लस, आयाका, आयाका चला सकता है फ्रीज में, आयाका जिंक्सू डियोना एंड कोई एक्स्ट्रा में ठीक चलेगा, वो भी ठीक चलेगा। चलो ये सब हो गया ख़त्म। अभी मेरा रेजिन बचा हुआ है 40, क्या किया जाए? चलो 2 रन मार लेते हैं एम्बेलम। अब रेजिने का कमी हो गया अबे। इसमें स्टोरी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कैरेक्टर वेपन सब स्किप किए हैं, इसमें ड्रैगन स्पेन मिला नहीं। नहीं तो हमारी जॉड हो जाती एकदम हूता खतरनाक वाला। कोई आ नहीं रहा तो मेरा फिशिंग कर दूं। मेरा मेन सेकंड आईडी में गान्यू बिल्ड करना है पूरा, भूल गई। Stabilize. Order guide you. All hail. Born of ice and frost. अबे साला लगा क्यों नहीं? रचित वर्मा, वेलकम टू माय चैनल। Build GANYU easily by giving her no रजित वर्मा, क्या हाल चाल है भाई ब्रो? CLG से
जी अरे हमारे कॉलेज से बिल्ड गान्यू इजली बाय गिविंग हर नो आर्टिफैक्ट इजी अनरिस्ट का डैमेज। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। ये काम मेरे सेकंड आईडी में हो रहा है। ठीक एक मिनट और लगेगा। चलो Adventure time. Teamwork is dreamwork. Gather. I will have order. भागना मत साले। Eat this. Nice and spicy. For Rex Lapis. आ गया कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके एकदम जबरदस्त। We're way behind जिस schedule. दिन तिलक मिलेगा मेडन लगा के शोकेस करूंगा तिलक। ओहो जिस दिन अगर डीलुक यही मिलेगा, बिल्ड रखना है तो रस्ट भी दी दूं। अगर यही बिल्ड रखना है तो रस्ट भी दे दो। चार्जर अटैक ओपी सही में। चार्ज अटैक ये क्या है? नॉर्मल अटैक बाय 10% बट डिक्रीजेस चार्ज अटैक डैमेज बाय 10%। नूबड़े 10% का डैमेज घट जाता है बे चार्ज पे। रेस्ट देने पे नॉर्मल सिर्फ बढ़ता है। वो चाइल्ड के लिए सही है या फिर योएमिया के लिए, समझा? जो चार्ज अटैक वो वाली नहीं मारती है उसी पे वो सहेगा, इसीलिए जमेगा। तो बोला इसीलिए बोला रस्ट ओपी। रस्ट ओपी एकदम बेस्ट वेपन है भाई गान्यू के लिए। रस्ट फुल बफ मिलता है, एकदम फुल डीबफ मिलता है। क्या Luxury, but I love listening to the rain. चलो मेरा कौन सा इवेंट बचा हुआ है? ओके 2 को ये बचा हुआ है। ये 8 घंटा में खुलेगा, ये 1 दिन में खुलेगा। चलो इवेंट कर लेते हैं, फिर भूल भूल जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। Oh, the sun's out. When did that happen? ये इवेंट फुली कब खुलेगा? ये इवेंट बैक फुली पूरा कब खुलेगा? ये खुलेगा तुम्हारा 1 दिन, हाँ मतलब परसों। कल खुलेगा रात में, ठीक है? एक के बार में जिसको करना होगा पूरा वो कर सकता है, जिसको दिक्कत होता है ना, इसीलिए। चलिए 10x वेलकम टू माय चैनल। टाइनिक्स बोबल मुस्लिम की हाल चाल है माय फ्रेंड। तुम्हारा गान्यू देखना है? ठीक है भाई टाइनिक्स का गान्यू कन्ने है नाम को चिवर तोर नाम को चिहुरे टाइनिक्स ले ये नहीं है भाई। क्या खुल जिए? क्या खुलेगा? अबे इवेंट पूरा 1 दिन में वो करना चाह रहा है इसीलिए। रोहित, ये रोहित कौन है? वाक्या मुरासाकी कैशियल 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 कन्नेरे। देखो मटरू पर शायद गैंशेट खेल रहा है। बाबू किरीतो सारांश वाक्या गान्यू हैव कैशियल AR-54
69 ओपी अटैक बहुत कम है, रेशियो भी बहुत कम है, प्रोटो टाइप क्रेसेंट है, 4 पीस वॉन्डरर, ओहो हो 99, 205, ओहो हो क्या आर्टिफैक्ट है, एकदम खतरनाक रोल, ओहो हो ओपी ओपी आर्टिफैक्ट है ये, अरे वाह क्या बात है जियो। 21 की डैमेज, एचपी, अटैक, डेप्थ कोई काम का नहीं है, ये तीनों कोई काम का नहीं है, लेकिन ये वाला बड़ा मस्त रखा है एकदम 99, एकदम खतरनाक, कोई काम का नहीं है। आर्टिफैक्ट एनर्जी चार्ज भी उतना काम का नहीं है, एचपी भी काम का नहीं है, अटैक थोड़ा मोड़ा काम का है, लेकिन अटैक के गायब कर दिया पूरा। ठीक है, तो अगर बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे तो ठीक है, वेपन में भी ठीक है, ओके, लेकिन तुमको मेहनत करना पड़ेगा और क्रिट रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्रिट डैमेज तो आसमान छुआना पड़ेगा, अटैक चाहिए 2000 के आसपास, क्रिट डैमेज चाहिए 150 का प्लस। बस सेट कंप्लीट करने के लिए बस सेट कंप्लीट करने के लिए, सेट कंप्लीट करने के लिए तो ठीक है, मतलब और अच्छा तो आर्टिफैक्ट मिला होगा ना, वॉन्डर का इतना घटिया कैसे मिल सकता है भाई। हाँ एक एक ठीक है, वेरी नाइस, इसको बढ़ा लेना और इसको बढ़ा लेना, सिर्फ थोड़ा और अच्छा पीस तुमको खोजने की जरूरत है, फिर तुम्हारी गान्यू जॉट ओपी हो जाएगी। अभी स्पाइरल भी नहीं किया लौंडा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है गान्यू बिल्ड, सिर्फ आर्टिफैक्ट में रोल सही हो जाए बस, उसके बाद सब कुछ ईजी। मैंने 7 महीने पहले खेलना इसको स्टार्ट किया है, इसलिए वॉन्डर्स नहीं है, क्रिट रेट क्रिट डैमेज कितना रहना चाहिए। पहले खेलना स्टार्ट किया है, आईएल वंडर्स नहीं है। देखो क्या होता है, डीएमजी कितना रहना चाहिए, क्रिट रेट रहेगा 50 के आसपास तो ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस होगा कि तुम्हारा क्रिट फर्स्ट शॉट हो जाएगा, फर्स्ट हो गया तो सेकंड होबे करेगा, सेकंड हो गया तो थर्ड होबे करेगा, समझा, वो ऐसा सिस्टम है गानियों में, ऐसा नहीं है साहब के जैसा कि एकदम 70 चाहिए 80 चाहिए, 50 पे भी काम चल जाता है, फ्रीज में तुमको 20 30 भी रखेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि क्रिट रेट अलग से मिलेगा और गानियों का अलग से मिलेगा, लेकिन क्रिट डैमेज हाई रखना होगा। पैंचो ये क्या है भाई, Freeze to the core. कौन सा वेपन दे ले, जी F2P वेपन सही है, इसमें तो एनिमी ये नहीं दिख रहा यार हमको सही से। क्रिट डैमेज कितना रहना चाहिए, क्रिट रेट तो मेरा हो जाएगा, क्रिट डैमेज कितना चाहिए, क्रिट डैमेज 150 से जितना हाई लेके जा सकता है लेके जाओ। क्रिट रेट तो मेरा हो जाएगा, डीएमजी कितना चाहिए, हंटर्स पाथ निकला ना तुम, हंटर्स पाथ या क्रिट डैमेज सर, By royal decree. तब तुमको 150 से ज़्यादा रखना है, 150 क्या 200 तक का तुमको रखना है, क्रिट रेट या क्रिट डैमेज सर्कुलेट जैसा तुमको नीड हो वैसा डालो, वैसा थोड़ी है, जरूरी नहीं है भाई। क्रिट रेट फ्री में 44 क्रिट रेट, तब तुमको क्रिट डैमेज का हेड देना, नीचे अटैक का रेशियो आना चाहिए और बस हो गया। The odds are against us. Teamwork is dreamwork. Odds revealed by. Cool it. क्रिट डैमेज का हेड दोगे तो तुम्हारा 180 प्लस हो जाएगा, 100 110 हो जाएगा ऐसा ही।
जुगाड़ कहाँ से करेंगे? I'm going in. Like एम आर्टिफैक्ट में आना चाहिए। गजब लौंडा है। No rest for the freeze to the core. Rack and ruin. Yuck. More speed. मारो पहनचो। एम का जुगाड़ कहाँ से करेंगे फिर? नीचे होना चाहिए बस। Let's light it up. अबेम रोल Everybody stand back. Odds reveal that. This moment will be frozen. अब एम रोल होने का वेट, हाँ नीचे आर्टिफैक्ट में होना चाहिए। Vengeance will be mine. तब कहाँ से आएगा बताओ तुम ही, बिना ऐसा ही है। Eye for an eye. अबे मर न रे साला। I condemn you. सेंसे लायोनी की बेटी सुप्रिया। लियोनिक की बेटी सुप्रिया वेलकम स्ट्रीम। की हाल चाल है? नमस्ते नमस्ते अंकल जी। अंकल जी हैं हम। ठीक है भेजते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटी, क्या हाल ठीक है। आपका? आपका stabilize. आपका हाल बताइए कैसा है? आप बड़े दिन के बाद आई हैं ना। हम तो गेम खेल रहे हैं एकदम चटक, एकदम मस्त है। चाचा जी चाचा जी तब बना दो, कोई चाचा जी बना दो कोई। लायोनी इज लाइव। वेलकम टू माय चैनल। चाचा है वो तेरी। लियोनिक इस लाइव वेलकम किया। चल चाचा है वो तेरी। साले कर। लियोनिक पूरा लौंडियाबाजी कर रहा है नहीं। यही सब तुमको सिखाए थे हम, बताओ। मेयर अंकल जी है। हमारी बेटी यहाँ क्या करती है भाई? नाम किसी और का, काम किसी और का। संभाल नहीं रहा है तुम, देखो बिगड़ जाएगी फिर। हमको नहीं बोलना। आजकल के बच्चे भी नहीं। Look at you, Boozle. Things are about to get dicey. Quietly now. आजकल के बच्चे भी ना बहुत बहुत तेज हो चुके हैं बच्चे। माय चैनल। खड़े खड़े मार लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। Be still. 4 किसी अंदर मॉमी येलान ओपी। ओहो येलान फैन। फ्लूट चला रहा है बेचारा, बताइए। शील्ड के साथ गायब होता है कि शील्ड सिर्फ गायब होता है? शील्ड गायब होता है सिर्फ। Here comes the catch. You're toast. Gotcha. Kamisato on. लायोनी Sweet. डैडी। अरे भाई अरे 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 अरे। WP के साथ जीतिए Can't जाना। handle your dream. लियोनिक डैडी It's over. Quietly now. आपके साथ जीटीए जा रहा, सही में The depth's back. जीटीए खेलेगा रे। वाह लियोनिक डैडी प्रणाम। हमको कुछ रुपीस चाहिए। हमको कुछ रुपीस चाहिए, दे ही रे। भतीजिया मांगी तो Look at you. नहीं दे पैसा उसा, फिर जाके देखें लुटवा दो तो। Here comes the catch. इज्जत लुटवा दो तो सीधा, पैसा ना देते हैं। Busted. Kamisato on. Suyu. Escape.
बस जल्दी आओ ना, जन्म लो नहीं यार। Sayonara special. Things are about to get dicey. Oh yes. Gotcha. Take it easy. After frying pan, it's with खाली ओएस मांगती है ये। Be still. खिलाओ भाई ओएस, 5 रुपया के आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। Another कि test. चला मैं WP पार्टी मांग रहा हूँ। ओके चला, मैं वो पार्टी मांग रहा है, पार्टी दे रहा है रे। Look at you, Blue Town, shaking and stirring. रे रे रे, पीछे आओ पीछे आओ। बस हक दिए। चलो काफी है, 2700, 1500 तक करना होता है ना। जीटीए जा रहा है, क्या खेलेगा जीटीए में? पार्कोर। अबे यार बार बार ये क्या खुल जाता है। चलो सब कंप्लीटेड है, चल रिवॉर्ड ला। ये कुछ नहीं देगा। सब में हो गया है ना 3? हाँ चलो सारा कंप्लीटेड है। 2 गो और खुलेगा एक दिन बाद, 8 घंटा रात में, फिर एक दिन बाद, यानी कि एक दिन आज 8 को, कल खुलेगा, कल रात में फिर खुलेगा। कल रात 1:30 बजे पूरा इवेंट खुल जाएगा। ओके, तो जो नहीं किया है कर लेना। और इस वाले इवेंट में 6 दिन बचल है। इस वाले में हमको फोटो खींचना है। चलो फोटो खींचा खींची करो। कितने साइड जाना था? ओके इधर जाना है। कल रात को हाई पूरा करूँगा, फिर पुल मरना तो। ये क्या है? मैं डेंड्रो मारना है। कल रात को ये पूरा करूँगा फिर पुल मारना। ओके थैंक यू। फोटो किसका खींचना है भाई? तो मूछ यार ले। मैगरमैथ का मगरमच्छ का। कुछ तो कर ही नहीं रहा है सब। टेस्टिंग। पहन ये इवेंट वो नहीं समझ में आता है यार, कैसा चूतिया टाइप इवेंट बनाया है। टेस्टिंग, ओपनिंग माउथ, ये क्या है? अटैकिंग का अभी तक नहीं खींचे हैं। चलो ठीक है, अटैकिंग का करवा देते हैं। पढ़ के आओ कैसा फोटो लेना है। ठीक है, बख्शोदी भाग गया।
भाग गया रे। अरे गांडू लोग, भाग कहाँ जा रहा है? Crumble. तुम चलिए। जाओ उधर। ये क्या बकचोदी है? ये क्या बकचोदी है भाई? लौड़े लगा देगा मेरा क्या अब? मारने का नहीं हमको, अपन बहुत शरीफ है। We're way behind पहन से schedule. तो गुस्सा में है। देखते हैं मारबे हल। देखते हो जाए दे। बार बार हम भूल जा रहे हैं, इवेंट यहाँ से खुलता है। अरे हुआ नहीं यार। अटैकिंग रेस्टिंग बाय द शोर ओपनिंग माउथ इन द वाटर। रेस्टिंग वाला तो ले लिए, अब बहनचो अटैकिंग वाला कौन देगा? खींचे तब पर भी नहीं हुआ। Solidify. चलो पानी में तैर के ऊपर जमीने में मारेंगे। फिर करो अटैकिंग। रुको रुको, इधर वाला को मारेंगे। हाँ आते हो। भाग साले। चलो अब ठीक है। ये कौन सा है? शेरवा के पास जाना है। शेरवा इधर होगा। फिशबोल एंड टाइगर। शेरू। मस्त पुज मार साले। गुस्सा आ गया। कैसा कैसा मूड में खींचना था इसका। चलिए प्लेइंग विथ टेल। अब क्या है? पासिंग देयर फेस, प्लेइंग, अटैकिंग। मुंह धोने समय पानी के पास जाएगा। जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। जाने दो पानी के पास जाने दो। मुंह धोएगा बेचारा। अरे मुंह धो रहा है यार। चलिए अब अटैकिंग वाला। क्या रे चिलवा? फिशबू लैंड के पास तो वही नहीं है। बहन चो, इसका पूछ तो जमीन में घुस गया है। होमकमिंग हैप्पीनेस। वेलकम टू माय चैनल। सोनू कुमार एम, वेलकम टू माय चैनल। कौची कर रहा है? होमकमिंग हैप्पीनेस बाबू सिंह की हाल चाल। वेरी वेरी वेलकम टू द स्ट्रीम। कौची कर रहा है रे? प्राइवेसी नष्ट कर रहा है उनका एकदम।
मार रे मार, दम हो तो मार। जियो, क्या बात है जियो। मर मत जिए रे, ऐसे ही है। मारे लाओ, हाँ ये बात। चलिए एकदम मस्त, सारा फोटो शूट हो गया इधर। स्लो में बागू। स्लो मो में भागूं। बेचारा एक भाई का मर्डर हो गया और आप यहीं पे क्या कर रहे हैं? भक्कक। भग्गू। देखो इस जंगली का वो है। एक फोटो हो जाए, रुको ऐसे। बागू। चाट रहा हो क्या चीज? रुक साला, हाथ नीचे कर। हाथ नीचे करो नहीं यार, हाँ। चीज। अरे साला मुंह फेर लिया रे जंगली से, दोनों का मस्त पूरा। साला छी, हटाओ नहीं यार हाथ, हाँ। हाँ अब हुआ मस्त। Boats are made for transferring commodities back and forth. वो And कहाँ those गया? that come across LIYE tend to stay a while. So it is where many Say things come to cheese. settle. अबे यार ये तो पूरे बैक हो गया। सवारी नहीं मिलेगा यार। अरे यार बैठा लो। बैठाइए नहीं रहा साला। इतना हरामी है शेर ये बाघ। धात तेरी के। नहीं मजा नहीं आया। Streamlabs. Welcome to my channel. Roll Sonu Kumar M1 Mora and now मजा नहीं has आया Mora. पोज में। तुम पोज नहीं मारा, अच्छा चलो इवेंट हो गया सब। फोटो शूट भी थोड़ा मोड़ा हो गया है शेर के साथ। Top Rs Beast Indiango को श्लोक Genshin अरे Impact एक Nightbot मिनट, Gamer नहीं from ऐसे नहीं। Soul Gamers Craze उनने 87. कौन है? एक वो उनने भी है। कुमार M प्रभाष मठू प्रसाद गंतायर. वाह भक्कर. वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब होगा फोटो शूट असली। कि क्या दोनों अपने मौज में, बेचारा बेनेट का कोई इज्जते नहीं है, बताइए। Ow! Where did that come from? ये अब पोज हुआ। और दे कुछ हाँ. पोज। Ignore EKDM from Baghu. लोल बोट साला स्ट्रीमलैब्स को वेलकम कर रहा। हाँ वो करता है इग्नोर, हाँ यस बक, हाँ हाँ हर तरीके से चीज। भागो भागो भाग, स्लो मूव में भागो। कहाँ भागो बे? चलिए हो गया। और बागुआ कोई पोज देंगे आप?
ये साला ये घटिया पूछता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मस्त 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 आने वाला था। पग हवे गायब हो गई रे। है गायब हो जा रहा। बेकार। एक मिनट एक मिनट। चलो थोड़ा मोड़ा ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम नाउ स्कूल। अरे वो बाजी घर है रे। ऑप्सीमा, वेलकम टू माय चैनल। आई एम होमकमिंग नाउ। फोटो नहीं खींच सकते हैं यार अपना। ये क्या तत्ती कर रहा? ए सस्ते फोटोग्राफर। ए सस्ते फोटोग्राफर ऐसा क्या है भाई? एक काम करते हैं, से घर इन दोनों वापस को आ बुलवाते रहा हैं हूँ तीसरा के जिससे पास। पी Off we go. क्या? अरे भाई जो ही क्या था, बहुत गर्दा पोज था ये। लायोनिक यहन क्या कर रहा वे? ये सो जा। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जेंशिन गॉन थ्रू रॉन। अरे भाई जो ये क्या अरे भाई 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 That's gonna hurt in the morning. बड़ा गंदा सीन हो गया। हाँ वाह 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 वाह। ये क्या हो गया? ये क्या है? चाहिए पेट में बच्चा लेके चल रहा है बाघ। बघू का। Off we go. बेचारा रे। ओए हाय हाय, थोड़ा अच्छा आया है अल्लाह कलर। माफ करे, बहुत मनूठ लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा कहाँ भाग तौबा, गया रे सारा वो? मूड खराब कर दिया। वहीं से किसका भाग बच्चा? भाग गया। Adventure time. इन्हें कहा भागा भागी कैले वहीं चोट फूक उक के बैठा ले का रे बगवा। Unlit caught with sleeping tigress. Always caught with a sleeping tigress. अच्छा खासा फोटो शूट हो गया नहीं? जबरदस्त वाला है, कल लगाएंगे यही थंबनेल। जंगल में हो गया मंगल बाघों के साथ। Rise! बहन का सीधी कहा गया। तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रे मेरे बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरे साले। मोरा। अभी मुरझा देंगे। मंगल करने वाला अलमिद है। Off we go. अलग हाई फैंटेसी है तेरा। अरे 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 देखो देखो देखो। अरे बहन चो पगला का है गया एक भाई के यार। बताओ बहन चो। ये क्या है? अपना इज्जत बचा बाघ, अपना इज्जत बचा रहा है। What? मार दो हमको, जिंदा मत छोड़ो। मैंने किया कहा
कुआड़ा खींचे राइट। आज तो चाट लेगा सबका। हाँ सोनू कुमार MU सक्सेसफुली रिडीम्ड है फॉर मोरा। साला कहाँ भागा? एब्बे साले। दिखाओ दिखाओ गेमर फ्रॉम सोल दिखाओ यू ना। सक्सेसफुली रिडीम्ड कौन है ये लॉग फॉर मोरा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? इनके मस्त पास ना पोज, रहने को मस्त घर है, ना मस्त रोजगार है है, ना मस्त पैसा है है। पोज। ये क्या नशा मार दिया है? ये बात अब ना हुआ कुछ इफेक्ट। ठीक है कांड का उठा रहा है भाई। बघू भी लाइक में क्या जोड़ छोड़ दूं। ठीक है अब कौन उसके पीछे से कोई मारा है गंदा वाला लग रहा है जैसे हम आधा हो हमेशा यही गया। कहते हैं कि फोकस ऑन योर गोल यू विल गेट मेनी होल। सोनू कुमार MU आ सक्सेसफुली रिडीम्ड फोकस देखो ना कैसे भाग रहा है सारा। गेमर फ्रॉम सोल बड़ा यू मस्त फोटो आया है सक्सेसफुली लेकिन कुछ भी रिडीम्ड बोलो। बॉम्ब फॉर मोरा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। रहने दो हो गया। अब पोज अच्छा नहीं आ Adventure रहा। time. बहुत सारा मस्त मस्त फोटो खिंचा गया है। अबे तू क्या करना चाहता है? थोड़ा सा फोटोग्राफी टेस्ट कर लेते हैं। कहाँ जाता है रे सब फोटुआ? आर्काइव में जाता है कि नहीं जाता है? ये तो तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं है वो सीधा फाइल में गया होगा। चलो ये सब चीज हो गया। अब आगे का इवेंट चालू करें। चौथा वाला कैसे चालू होगा? ओके हमको क्वेस्ट जाना होगा। नारा नारा करने नारा नारा करेंगे तब खुलेगा रे ये सब। Let's go find some treasure. आर्कन क्वेस्ट। चलिए भूल जाइए आर्कन क्वेस्ट होने वाला है। हम चले सेकंड आईडी में। अबे तो करना क्या चाहता है MMS बनाना है क्या। सोनू कुमार MU सही आइडिया दिया है। रिडीम्ड बीटा सारा फॉर मोरा। फोटो को एक वीडियो में कर देंगे आर्कन कन्वर्ट क्वेस्ट। और शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। नाना ना नारे नारे करो। ना 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 से करो। ना 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 नारे ना 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 नारे 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 करना है तुमको। नारा नारा होता है इसमें। नारा नारा आरा नारा। आर्कन क्वेस्ट में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी लग रहा है हमको। वाह 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 क्या ही दिमाग रे तेरा। वाह वाह एकदम। वाह वाह क्या हाई दिमाग है री तेरा। अरे तभी तो भाई खतरनाक दिमाग है मेरा। नो 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 नो।
रुकी रे। There are leaves around, चलिए and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. म्यूजिक चेंज कर दिए हैं। कितना है? 123। आज क्या करना है? डोमेन मारना है कि कुछ और मारना है? डोमेन एक्सपेंशन करना है। अरे अरे ससर जी भी। Follow the wind. यही टीम लेके अल्ट्रा चल। इंस्टिंक्ट करो बीसी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गांड फट जाता है भाई। Into the wind. उसके लिए स्पिरिट बम खाना पड़ेगा। One with nature. Get moving! Stabilize! हेलो, इस सब में से किसी का दम है कि स्पिरिट बम मार दे? ये वो डंटा ने मार पाता है सही से, देखो। Into the wind. Retribution! कहाँ जाते हैं इधर? चल। Time to go. मटेरियल लवा रे, नहीं तो लो मटेरियल लवा। अभी 121वां एपिसोड पे जा चुके हैं। Stabilize! Confess! The wind knows it. Gather! और फिर सुपर खाना। Time to go. One with nature. पहनचो खींच दे, फिर सुपर खत्म। 10 एपिसोड और फिर सुपर खत्म, फिर ड्रैगन बॉल खत्म। गोकू मर जाएगा ना, मतलब पूरा तो वर्ल्ड खत्म, पूरा मल्टीवर्स खत्म, एक वो बचेगा। सीधा साफा चट क्या? The wind knows it. ड्रैगन बॉल नहीं खत्म। ड्रैगन बॉल नहीं खत्म? जो खत्म कुछ ही होगा यार, सब मर ही जाएगा, कोई एक को बचेगा। वही हो गया। Stabilize! Order guide you! अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिलिए गया एकदम, अब जॉड हो गया, गॉड लेवल पे आइए गया है हम लोग का गोकू। हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मत बताओ। Where did I... नारा नारा करो।
वही करने वाले थे, फिर आ गए वापस। स्टार्ट किए, स्टार्ट करते ही बंद कर दिए। आओ वेस्ट, क्या हाल चाल? गया था कॉलेज, तबीयत खराब कर लिया। Time to go. नाइन पे है। मैं जा रहा प्रीमो खोजने। घंटा बीसी टाइम पास करा रहे। Solidify. This is order. One with nature. मजा आ रहा प्रीमो खोजने, नारा नारा करेंगे। Fallen leaves. Adorn my night. Stabilize. साला कोई छुएगा नहीं, बहनचोद छू दिया। Solidify. Into the wind. घंटा बीसी टाइम पास करा रहे कॉलेज में। बोलो, कॉलेज में धरना प्रदर्शन करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, करवाओ एकदम, हमको नंबर पास वाला दिलवाओ। ऐसा करो जाके धरना प्रदर्शन, तब ना नंबर मिलेगा। क्या गुंडा बनेगा रे तुम लोग? Add Astra. रॉक टेरर की बात है, रॉक टेरर। माल पानी चाहिए, रुको। अरे टाइमिंग है गलत। भेज फिर से। Bro, did you unlock new 4-star weapon? Time to go. न्यू 4-star weapon न्यू कब कहाँ आया बे? मछली पकड़ने पे मिलेगा क्या? मछली एसोसिएशन कहाँ है? यहाँ है, देखें मछली एसोसिएशन के पास क्या है। ये वीक भी नहीं जाने वाले कॉलेज, मेरे को प्रोजेक्ट खत्म करना। नारा नारा करेंगे। ये वीक भी नई जेन वाला सीएलजी, मेरे को प्रोजेक्ट के एचटीएम करना। जा कहाँ रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं। Next on the agenda. स्पेशल कैमरा नहीं लिया है ना अभी। We're way behind schedule. We're way behind schedule. यार क्लॉडिया मॉम्मी के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाए। यार क्लॉडिया मम्मी के लिए टाइम निकालनी मुश्किल हो जाएगी। ओ हो, राशिद बहन चुद नाम। ओके, न्यू वेपन यहाँ है। एंड ऑफ द लाइन मछली छाप इधर है। रिफाइनमेंट है ये, नया नया मछली आई है एकदम। थर्सडे को आर ही वो। हाय हाय हाय। जीजी प्लेस। वेलकम टू माय चैनल। नया वाला है ये। बिल्ड शो करो। गमडू का बिल्ड शो करो। रुको दिखाते हैं।
लीजिए गमडू बिल्ड 58 243 232 एक क्रायो डैमेज बोनस टीपी 4 पीस वॉन्डरर C0 1088। और बताइए के भाई से भाई की हाल चाल। वेरी वेरी वेलकम। गमडू बिल्ड मेरा यही है वेरी जी, ठीक है कि नहीं है? जबरदस्त। So nice to de-stress. बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू। लेकिन अमोस वो ज्यादा डैमेज देता है। तो भैया एमएस वो मिलना भी तो चाहिए ना। अब जिस किस्मत में है तो क्या करेंगे बताइए। जो फ्री में मिल जाता है उसको लेके संतुष्टि करना पड़ता है ना। अब एक वो 5 स्टार निकल गया है तो दूसरा वो के लिए हम एक 2000 डैमेज के चेंजेस के कारण हम एक वेपन बैनर पे अपना थोड़ी मरवाने जा सकते हैं। सही बात है कि नहीं? मेरे अकाउंट से ले लो, R1 है उधर। मेयर ACC से ले लो, R है उधर। R1 है तो काल लेके हैंडलिंग है करेंगे। लेकिन योइमिया नहीं। गन्यू है लेकिन अमोस नहीं। एकदम सही, यही तो है F2P में दर्द, यही तो है। L है पर B नहीं। ताओ है लेकिन होमा नहीं। एकदम सही। दुख ही दुख है। एकदम ये दुख काहे नहीं खत्म होता है भाई, बताओ तो। F2P को यही सब सहना पड़ता है ना। वेपन किसी और का, कैरेक्टर किसी और की, और खेल कोई और रहा है, और मार कोई और रहा है। चलिए सीटी में हम सीटी बजा दिए। दोस्त रिचेज में 6 दिन है अभी, जो नहीं कंप्लीट किया है कर लो। ये भी खोलना पड़ेगा। रुको तो बहन चो गाना चेंज करने दो। कन्नड़ है, हाँ इधर है। चलो बाय। फिर लाला लाला कितना करवा भाई रे। चलो बाय। कहाँ? गुड लक विथ नारा नारा। हम नहीं जा रहे नारा नारा में, हम जा रहे हैं लियू। ट्यूसडे को खुलेगा, वेरी नाइस। टैलेंट्स, एक मिनट, टैलेंट्स बुक कितना है मेरे पास? सुमेरु को एंजॉय हाई नहीं कर रहा ये बंदा। हमको उधर मजे नहीं आ रहा। 378 75 41 सही है। कौन सा मटेरियल चाहिए था? अंडा छाप ये चाहिए था। थोड़ा बड़ा लगता है मारना पड़ेगा। नहीं मारनेंगे नहीं तब पर भी काम। कैसे लॉग है, बस कैरेक्टर निकलने से मैटलैब रखते हैं। अरे उसका भी है, उसका टाइम आने दो, सब होगा। तुम काहे नंगापंती कर रहा? सब होगा, टेंशन ना लीजिए। हम यही हैं, हम कहीं भागने वाले थोड़ी हैं। बताइए। क्रायो बॉस धोना पड़ेगा आज। यस, चल अब जाए क्रायो बॉस को उड़ियाने।
अब सिर्फ क्रायो बॉस मरेगा वॉन्डरर्स ऐसे का। नहीं खेला जटा ब्रो आरपीजी गेम। ऐसे नहीं खेला जाता ब्रो आरपीजी गेम। कैसे मैप के पूरा एकदम कोना कोना में घुस घुस के उसका एकदम You have घास। to enjoy new content. ओहो, यू हैव टू एंजॉय न्यू कंटेंट। ये भी ठीक है, वेरी भारी ठाकू। देरी। वेलकम टू माय चैनल। हनायुमी से प्रोटोटाइप अच्छा है कि बुरा? सिंह क्या चाल है? हाना यूमी से प्रोटोटाइप अच्छा है या बुरा? हम तो बोलेंगे हाना यूमी। प्रोटोटाइप भी है लेकिन उसके बस पैसिव बेटा। के ऊपर। दिखा देते हैं तुमको, रुक जाओ। हामा यूमी वाला बिल्ड किधर है? मेटा पे ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। अरे तो ध्यान दे कौन रहा है? हम ही तो दे रहे हैं सिर्फ। अरे कन्ने हैं यार फ्रेंड। क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था बे? रुक जाओ। हाँ You या। have to enjoy the story. अबे कर रहे हैं भाई, आराम आराम से करेंगे ना। इधर है देखो। हामायूमी R5 नॉर्मल अटैक पे 32%, चार्ज अटैक पे 24। ठीक है। When the equipping character's energy reaches 100%, this effect is increased by energy recharge। तुमको फुल रखना पड़ेगा तब ये वाला वर्क करेगा, गर्दा वाला। ठीक है। और 55% का इसमें तुमको अटैक मिलेगा, बेस अटैक मिलेगा 454 का। और कौन है भाई? एनोस। ये तो एमओ से रख ले, एनोस एमोस रखे हुए हैं। ठीक है। You have to do HR quest to open the new map and enjoy it. You have to do 12-hour quest to open the new map and enjoy it। थैंक यू भाई, बहुत दिन है, हम आराम आराम से करती हैं ना ब्रो। सब बस अमीरे इवेंट है से यार। प्रीमो चूसने से कुछ नहीं होगा। एरिया से भी चूस रहे। गोकू के पास तो है ये नहीं है। प्रोटोटाइप वाला लौंडा कौन है भाई? सब हामायूमी चलाता है भाई। इस बात से हमको देखने को मिलता है कि 4 स्टार वेपन में हामायूमी चलती है और 5 स्टार में एमोस। सही है, बट फ्रीज टीम में अल्ट मारना इम्पोर्टेंट होगा। सो आई गेस फ्रीज टीम में प्रोटोटाइप और बाकी वॉन्डर्स में हामायूमी बेटर होगा। हाँ ये भी सही है। इतना आराम से मत करना कि नेक्स्ट सीजन आ जाए। नेक्स्ट रीजन आ जाए। अरे वो भी कोई दिक्कत है? एमोस, सब एमोस निकाल के बैठा पड़ा है भाई। केवाईसी के पास भी एमोस होगा ही होगा। क्या बोलें, सब एमोस लेके बैठा है। तभी दबा देगा ये। नहीं है इसके पास। छुनछुन मारू के पास हामायूमी है। ओके, मेल्ट टीम है तब तुम्हारा ये चलेगा और प्रोटोटाइप तुम्हारा फ्रीज में चलेगा। ठीक है। एक सेकेंड, हम उसका भी देख लेते हैं। लेकिन मेल्ट में तुमको ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा, ये भी है। मेल्ट में मज़ा आता है डैमेज देखने में, सीधा एकदम। क्या बेलौंड, जल्दी से दिखाओ वेपन। प्रोटोटाइप क्रेसेंट में चार्ज अटैक ऑन हिट्स वीक अपोनेंट, मूवमेंट स्पीड बाय 10%, अटैक बाय 36%। ये सही है। पता चले लोग सिजनाया में फाइनल बॉस से लड़ रहे और अभी तुम सुमेरु ही कंप्लीट कर रहा। सही बात है, एकदम ऐसे ही चलना है कि सब कोई गेम इंड मार दे, सब ग्राइंड व्राइंड करे, हम आराम से फिर स्टोरी बैठ के चिल मारे। ठीक है। प्रोटोटाइप है तुम्हारा अच्छा उसमें
फ्रीज में हामायूमी है तुम्हारा, मेल्ट में। एकदम सही बोला है और सही समझ भी गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें तुमको मिलेगा मूवमेंट स्पीड भी और 36% का अटैक मिलेगा अलग से, लेकिन वीक स्पॉट पे मारना होगा तुमको, इसका ध्यान रखना। वीक में मारेगा तभी तुम्हारा ये ठीक रहेगा। फाइनल बॉस से लैड रहे और अभी तुम सुमेरु हाई कंप्लीट कर रहे। सही है, सही है, एकदम सही है। यूएफ का तू स्टोरी बता दे सिर्फ। विष्टवा यूएफ में भी कुछ है स्टोरी की नहीं है कि मैप पे है सिर्फ? Off we go. Yeah, that's gonna hurt in the morning. Let's light it up. I'm going in. Wind Strider. Witness the power of the wild. Huh? Time to go. जो क्रिटेन होता है यार, उसमें भी सिबलिंग ढूंढना होता है ब्रो। ले पैंच गेम हम लोग के साथ फुल कॉपिंग खेल रहा है। उसमें भी सिबलिंग ढूंढना होता है ब्रो। एचपी का मिला है एवरेज पीस, 3 को मिला है, वेरी नाइस। ग्लैडिएटर मिला है, वॉन्डरर ट्रोप्स चाहिए हमें। करो सिबलिंग। रुको कॉल आ रहा। हाँ बोल। Toodaloo. Wanna come over for tea? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. चलो ठीक है। Toodaloo. उसमें किसी का भाई खोजने के लिए नेक्स्ट प्लेनेट जा रहे हैं, वो आधा डेजर्ट एंड आधा साइबर पंक सिटी। मतलब चुतियाप है। उस गेम में भी वही चुतियाप है जो इस गेम में। कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आया। बॉलीवुड टाइप ये भी कॉपी मार ले पैंच, इधर से उधर इधर से उधर। एक फोटोग्राफी का काम आया लेकिन जाएंगे नहीं। पेमेंट कम है। The wind knows me. Rain outlines her.
और स्कूल में किसी का एनुअल फंक्शन है, वो सब है, तो उसी का शूटिंग करना है। कुछ भी पेमेंट नहीं आएगा भाई, लटका देगा, वो भी लंबा चौड़ा। उसमें किसी का भाई खोजने के लिए नेक्स्ट प्लेनेट जा रहा हद है। है यार। वो आधा डेसर्ट एंड आधा साइबरपंक सिटी। हाँ Let's light it up! One with nature. No, my sword! चलो, मेरे को लगता है हमको कैमरा खरीदना पड़ेगा, तभी ये काम सही से होगा। एमएमओ में स्टोरी बेकार ही होता है, कॉपी पेस्ट भी क्यों ना ब्रो। एमएमओ में स्टोरी बेकार हाई होता है, कॉपी पेस्ट भी क्यों ना हो। कितना माल दी रहे हो वो। अरे तो कैमरा नहीं ना मेरे पास, तो हम सिर्फ वो कर पाएंगे ना, हम भिजवा देंगे किसी और को, मतलब जो मेरा मैनेजर है उससे बात करना पड़ेगा, फिर वो किसी और स्टाफ को भेजेगा, चाहे हम जाएंगे, उसके ऊपर है। और ऊपर से बेंच हम अपना कुल एरिया में हम नहीं करते हैं काम, मज़ा नहीं आता। स्कूल में फंक्शन रहेगा, हम बकचोदी मारेंगे। Let's light it up! Let me weave you a verse. See? It's over! रिटर्न हो रहा साला। हम HP का आया है, लेकिन डेफ साथ में है। 500 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से निकलेगा, वो सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए है। उसमें क्या होगा, रहता है दोनों साथ में, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, तब ना मज़ा आता है, तब काम होता है, तब पेमेंट आता है। इसमें साला एक वीडियोग्राफी करना है, तो उसी में हम 3 जगह बात करेंगे, सर दर्द होगा। पैसों कब देगा कुछ पता नहीं, इस सब में पैसा नहीं देता जल्दी। जो स्कूल का प्रिंसिपल ये सब होता है ना, बहुत हरामी होता है, बोलेगा डायरेक्टर पैसे नहीं दे रहा है, तब कहाँ से देंगे आपको, ऐसे ही से करके बड़ा टहला देता है। ऊपर से जान पहचान है तब वो सर दर्द कर देगा। अरे भागे जा रहे हैं, यही ना है जी, ले लीजिएगा। बताओ, Adventure time! ऐसे काम होगा? Time to go. इसीलिए इस सब का करते भी नहीं है हम। बड़ा बड़ा पार्टी कराता है, हाँ शादी उदी कराता है, तब ना आता है भाई। 1 लाख का सेटअप है उसका, Into the wind. एकदम मार सिनेमैटिक, ड्रोन व्रोन उड़ता है, तब पैसा दिखता है। 2000 के काम है, 3000 के ओकरों में एक साल लगा देगा देते देते, क्या फायदा है काम करने से। ऊपर से मेरा कैमरा है भी नहीं,
दूसरा का कैमरा लाएंगे तो वही सारा भाड़ा ले लेगा 500-600। 500-600 800 के आसपास हमको मिलेगा। छोटा काम है तो वो कम ही मिलेगा। काम के ऊपर होता है जितना बड़ा। ब्रह शादी में लैट का सेटअप बहुत कम हाउ। ब्रो शादी में 1 लाख का सेटअप बहुत कम हो तो इन्हें रईस नहीं ना है भाई तुम्हारे जैसा। 1 लाख भी चला जाता है तो हम लोग एवरेज में आ जाते हैं कि हाँ हमको लगता है मेरा पेमेंट निकल जाएगा 4-5 हज़ार 10 हज़ार। ठीक है 10 हज़ार तक हम निकाल देंगे। वो कब निकलेगा कोई पता नहीं है। पटना है बुआ पटना, मुंबई नहीं है। 1 लाख सिर्फ हम पोछा मारने वाले को देते हैं। तुम वाइटी शॉर्ट्स डाला करो जिधर भी जाओ। जिधर भी जाओ Time to go. तुम एक शॉट डाला करो जिधर भी जाओ। वो सेट। अरे भाई सर दर्द होते रहता है वहाँ काम पर इतना फोकस होना पड़ता है कि मोबाइल चलाने का फुर्सत नहीं है। खाना खाना तक नहीं मिलता है। Adventure time. कभी कभी तो ऐसा ऐसा जगह चल जाओगे मतलब हर तरह का आता है ना। बड़ा बड़ा पेमेंट आता है, लो एंड वाला भी आता है। बेचारा गरीब उरीब शादी कर रहे हैं, कोई कोई भाग के शादी कर लेता है उसका भी मैं काम आता है। लास्ट वाला गए थे इस बार तो हम नहीं थे उसमें मेरा अरे भाई लोन। एक बार क्या हुआ था बताते हैं तुमको। शादी हो मतलब लो एंड था, बहुत लो एंड। ठीक उसमें क्या हुआ जो लड़का वाला था शायद कुछ जॉब वॉब करता था कि नहीं करता था। लव मैरिज था एक तरीके से। हाँ हम लोग को बाद में पता चला। हम थे नहीं उसमें, हम नहीं थे, हम सिर्फ इसी मैनेजर टाइप थे। मेरा दोस्त का दोस्त का दोस्त ऐसे था मतलब जैसे अभी कॉल आया ना तो उसको कोई और बताया, उसको कोई और बताया, ऐसे घूम के मेरे पास काम आया। ठीक फिर देखें कि बाद में पता चलता है जो थे मेरा मैनेजर था वो सब शिफ्ट कर दिया। मेरा हाफ पेमेंट था उसमें, जो कमीशन था मेरा वो हमको मिला। काम सब वही संभाले, हम नहीं जाते। जो मेरा दोस्त वो वाला सेटअप रहता है हम उसमें काम नहीं करते हैं। काहे कि काम करने नहीं देगा वो सब। इतना सर दर्द करेगा कि वो सब काम करने देगा कतई नहीं। भूल जाइए। बोलेगा चल 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 खा पी के आते हैं, चल 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 अरे घूम के आते हैं, चल ना लौंडा को देख के आते हैं। लौंडा देखते रहिए, इधर काम मिस। खींचना था फोटो, यहाँ तो आप मजा मार रहे कहीं और जाके। इसलिए दोस्त औलाद में हम नहीं करते हैं। अब जैसे कल जाते हैं तो कल में कोई ना कोई एक दो गो मतलब दोस्त का उस्त का चाचा भतीजा कोई ना कोई एरिया का लड़का जान पहचान वाला मिलिए जाता। तब वहाँ हमको काम करने नहीं देता, इसीलिए हम नहीं जाए। दूसरा एरिया रहता है तब जाते हैं, जैसे बाहर स्टेट में गए फिर कोई दूसरा शहर में गए वैसा टाइप। पटना ही में है तो कहीं दूसरा दूसरा जगह होता है ना वहाँ पे उस एरिया में ठीक रहता है। टेंशन मुक्त होके काम करेगा, सिर्फ एकदम अपना काम पे फोकस करोगे। उसका नहीं ना बताया, उसका क्या हुआ था। जो लड़का था उस शादी में लड़का लड़की राजी थी,
लड़की के पापा मम्मी सब राजी थे क्योंकि सारा खर्चा लड़की वाला देख रहा था, ठीक है। और लड़का के पापा और मम्मी लड़का के फैमिली जो थे ना वो एकदम नाराज थे, मतलब नाराजी थे, राजी नहीं थे शादी से, ठीक है। वैसा कुछ तो खर्चा उर्चा कुछ भी नहीं, पापा वापा कोई नहीं आए थे। बहन जो जानता है क्या हुआ उस शादी में, हम उस दिन पूरा नहीं टिके थे, हम सिर्फ गए थे शादी के दिन चेक वेक करने क्या काम वाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जाना जरूरी था उस दिन। No, my sword. This isn't good. देखते हैं कि अधिकतर जो था वो सब दोस्त था मेरा, ठीक है। प्लस बाद में वहां जाकर पता चलता है कि ये सब पूरा कंडेड़ी है, कांड हो रहा है यहाँ पे, शादी नहीं कांड हो रहा है, इधर नाराज है उधर नाराज है, Let's light it up. One with nature. शादी नहीं हो रहा मजाक हो रहा है। लड़का का शादी है और लड़का के कोई फैमिली ये वाला नहीं है, सब दोस्त लेके आया टांग के। बताइए उससे शादी होता है। हम भी लव मैरिज वाला मतलब ऐसा नहीं कहते हैं, नहीं काम किए थे इस सब में। लव मैरिज में हम इसलिए नहीं जाते, वहां पे मार वार हो जाता है, ठीक है। हम नहीं जाते इसीलिए। शी है लव मैरिज में ऐसा हाई होता शायद। कब कौन भागेगा इधर से उधर से, पेमेंट आने का बहुत कम चांस होता है। The wind knows me. Rain outlines your fate. Let's light it up. One with nature. बाराती आया कार लेके, एकदम शांति से, डीजे वीजे कुछ नहीं था, नॉर्मल था एकदम, खाली लौंडा का गैंग आ रहा है, लाइट जलेले है, आ गया बस, कार लेके घुस गया, पता भी नहीं चला कब बारात आ गया, इतना शांति से आया, बताओ। Off we go. तब जाके वहाँ पता चला कि लेकर फैमिली में का कोई नहीं आया है, लौंडा जबरदस्ती शादी करने आ गया है, और लड़की वाला सब राजी है। अब जो लड़का है वो घर से लड़के शादी कर रहा है। फोटोग्राफी किसने सिखाई? Time to act. तुझे फोटोग्राफी किसने सिखाई? जिसके यहाँ अभी हम काम करते हैं वही सिखा रहा है। स्टार्टिंग में जब हम जाते थे ना तो सीखने कम बकचोदी करने ज्यादा जाते थे, हम जाते थे आराम से, सीखते नहीं थे पहले। जब तक मेरे हाथ में कैमरा होता था तभी हम सीखने का ट्राई करते थे, ऐसे नहीं करते थे। Adventure time. फिर बाद में हमको रियलाइज हुआ कि ये चल क्या रहा है। हम बहनचोद शादी में आए हैं घूमने, यहाँ काम कर रहा है। पहले हम जाते थे, खाते थे, पीते थे, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, चिल मार रहे हैं, लग रहा है बहनचोद हम ही इनवाइटेड है पूरा वैसे। Everybody stand back. Clouds high. The birds. Witness the power of Gugwa. Huh? Higher, higher, pants on fire. टैग का मिला है, देखा। वॉन्डरर्स चाहिए। प्रोफेशनल कैसे बेन एफआईआर? प्रोफेशनल कैसे बने फिर वो वहां पे मतलब बहुत दिन ऐसा टंडेली किए हम, ऐसा लगता है एक सीजन एक महीना सिर्फ यही की, हाथ में कैमरा आ रहा है जैसे तैसे खींच दे रहे हैं, वो भी समझ रहा है कि अभी चलो सीख रहा है सीख रहा है सीख रहा है, वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, हम भी कुछ ज़्यादा उतना थे नहीं,
हमको सिर्फ था मन कि हाँ जाएंगे शादी वादी में, घूमने मिलेगा सब जगह, एकदम घूमेंगे फिरेंगे ऐसा। नया नया थे ना, बीच में कैमरा वैमरा कभी आ गया तो एकदम डरे हुए रहते थे, ज़्यादा थोड़ा डरे हुए रहते थे, कॉन्फिडेंस नहीं ना था कैसे खींचना ये वो, जैसे तैसे फिर खींच विच के आए आराम से। जब ट्रेनिंग में जाओगे ना उसका असिस्टेंस में, तब तुमको तुमको एक्टिव होना पड़ेगा। जो सिखाने वाला है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो तुमको सिखाने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका दिमाग है वो इस जगह पे नहीं रहेगा कि तुमको सिखाए। वो खुद अपने काम पे फोकस करेगा, तुम्हारे सिखाने पे फोकस वो नहीं करेगा, एकदम नहीं। वही मेरे साथ हुआ, हम भी सोचते थे भाई जो कुछ बताता है नहीं, हम करे क्या, तंग नहीं करते हैं, और उससे हम सोचते थे। बाद में पता चला कि साला, फिर जब हम सीख हो गए तब जाके हमको पता चला कि सही में मतलब कि सिखाएगा कैसे आदमी, इतना तो कामे पे फोकस करना पड़ता है। मतलब हाँ, लेकिन सिखाने वाला चाहेगा तो बीच बीच में ट्राई कर सकता है तुमको सिखाने का, लेकिन मेरा उतना भी नहीं था। हम खुद बाद में हुआ रियलाइज किए बहन जो हम कर क्या रहे हैं, खाली टंडेली मार रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ पेमेंट वेमेंट दे भी नहीं रहा। पेमेंट नहीं मिलता है जब ट्रेनिंग में रहोगे तो, कुछ भी नहीं, जीरो पेमेंट। सिर्फ जाओ असिस्टेंस करो, लगाने वगाने का सेटअप उटअप करो, कैमरा कैसे चलता है ये सब चालू बंद, ये सेटिंग वो सेटिंग स्टार्टिंग में सीखते रह जाएगा। एकदम गधा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। हाँ तब फोन नहीं किया तुम? अभी टाइम है, तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं पाया था, तुम्हें बोल। अरे यार बोला नहीं था बात। तबीयत ठीक नहीं है तो अब है काम चला हुआ है। हो कहाँ? ठीक है रुको कॉल करते हैं। परिणमा बोला है? हेलो। जीरो पेमेंट? हाँ भाई ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है इधर, एकदम जीरो पेमेंट। रुक जा एक सेकंड। Wherever in this world I roam, I carry memories. चलिए हो गया काम, This blade एगो तो हो गया, it is the दूसरा वाला last link I have to the land of my उसको birth. बता देते हैं इसको। Time to go. हाँ टाइम ले लिए हम, बोल दिए कि आ रहे हैं, 7 बजे आ जाएंगे वो। तुम भी जाएगा? चलो हम चलते हैं बोटल्स भरने, वही हमारा जॉब है। जियो लॉन्डे कुछ तो है जॉब। रुको जब तक में हम दिया जला के आते हैं, हमारा भी यही जॉब है घर में। And I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around. चलिए हेलो वंडरफुल वाइरेसिंग की हालचाल, वेलकम अगेन। If you wish to hear it. मैं कुछ लेकर बैठा है क्या, कुछ बोल बे। अरे दिया जलाने गए थे नूब, बोलेंगे कैसे। Time to go. इधर क्या कर रहे हैं। चले हम आर्कन क्वेस्ट करने। अरे कोई चैट में। चलो हम चलते हैं बॉटल्स भरने, वही हमारा जॉब है। चैट में कोई जल्दी बताओ। जा धोसरी के मुंह में कुछ लेके बैठा है, क्या कुछ बोल लेवे। चलिए कोई नहीं है, वेरी नाइस।
चला जाए यार कन्क्वेस्ट करने। तो चलिए आर्कन क्वेस्ट को स्टार्ट किया जाए वापस से। डोरी से मिलना था हम लोगों को। लुटेरी डोरी से वार्तालाप करने जाएंगे हम लोग। Hello. What are you two looking to buy? Wait, are you sure you're remembering that right? Paimon doesn't think it was that on the paper. What a unique palette. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Ah, the warehouse is up ahead. Please follow me. इसका नाम रौनक है। ओपी बताओ इंडिया से चोरी किया है कि नहीं? Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. Taken by mice means they sold out. I'm sorry. But as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Wait a second. Isn't it with side of tenters? I would prefer something that causes a heat stroke. No, that's not it. The paper said that heat stroke is the answer to erudition. Eating something that causes heat stroke sounds horrifying. अबे यार क्या है? Let's take a clook. कौन सा पेपर दिया है साला? Looking for the buy unripe hara fruit. Ask the informant to take to you Dory.
wearing a morning flower looking to buy canned knowledge. We are a Sumeru Rouge looking to buy product legally available on the market. Mouse customer. Rizzo Bland Tiger Matra. Taken by mice, sold to customer, taken by a Rizzo Tiger, confiscated by a Matra, back in Sumeru city style to purchase a small amount. Back in Port Ormuz style to purchase in bulk, complimenting a customer of a skill corresponding to hara fruit that causes dizziness and ringing in the ears. Customer erudition corresponds to hara fruit to the heat stroke. ओके कस्टमर ऑफ अ स्किल पूछेगा तो हारा फ्रूट, इरिडेशन पूछेगा तो हीट स्ट्रोक, ऑलमोस्ट बोलेगा तो बल्क में, सुमेरू सिटी बोलेगा तो स्मॉल अमाउंट, ट्रिसबोल एंड टाइगर। कन्फिस्केटेड क्या होता है? Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru city or Port Ormuz style? सुमेरू सिटी स्टाइल में अगर लेंगे तो Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! What? The matcha? Where? I'll hate them said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. अबे भागा कहाँ वो? He ran that way. साला भागते ही जा रहा है, रुक जा भाई। Look, he's over there. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. ओके कोई उधर बुला रहा है। Oh, that voice came from behind the building on the... Here, over here. You can stop running now. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Huh? Wait, you're Dory? Paimon sure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon
sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces, no matter how much more they might have. Not only will they get caught by the matcha, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business, we don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Can you show your products? Yes, of course, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Yeesh! Who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. Bahanchod. That's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. एगो है You've really got a good head on your shoulders, and quite the eye for quality. We'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 Mora more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million Mora. Say what now? Bahanchod ये क्या है? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Al-Haytham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? I think you are one who is curious. You just want to see me try it. Come on, come on. We still have around 100,000 of Al-Haytham's Mora left. So let's put it to good use by finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dory. We'd like to spend an extra 100,000 Mora. Excellent. Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. अरे बहन का एक और निकाल ले. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there?
Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Uh-oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. सारा बेकार है. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword Fighting Techniques 8. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dory and doors will open. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Al-Haytham. साला एक नंबर का लुटेरी हो बहनचोई. आ गया. हाँ पे दिया जलाने गए थे बस. Adventure time. You two made it. And from the... Whoa, there's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? साला चश्मा मस्त है. Wakala Funduk is under the academia's control, so naturally the academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the academia lost now? आ गया. साला Before that, चश्मा I have MST to है. ask, why are you two Bhai, so bhai, intent on bhai. tracking it down? You don't have to answer, of course. We want to meet with the Dendro Argon. He just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. So, where exactly? That's what we need to find out next. वंडर्स का बहुत ओपी पीस मिला है. मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, तुम कर देना, ठीक है? Your goal is to find it. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is.
However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the mantra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the Divine Knowledge Capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge Capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay, then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? चोरी स्कैम कर दिए 1 लाख का। हाँ भाई, बहुत गंदा वाला। बहन चोद, सही में मेरा मोरा घट गया लग रहा है। 1 नंबर की हरामी है यार वो। कौन था स्वॉर्ड स्टाइल वाला, दे दिए 1 लाख का। बड़ा एकदम भाई लुटेरी है। हम भी नहीं बिल्ड करेंगे डोरी को, साला बहुत लूटी है हमको। अभी और लूटेगी, फिर से मिलना है जाकर। देखो ना क्या क्या मिल गया है। स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निकेट 2 को खरीदे थे, एक और कहाँ है? 2 को न मिला था। Off we go. Adventure time. All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Alhaitham! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question.
All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Off we go. Off we go. Boba, get them! Stabilize! No touching! All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. गंदा कटने वाला है तेरा। Hey, how are you feeling? I felt something for a moment. Whatever was inside the knowledge capsule became a part of my memory. You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. देखते हैं। पैंचुत कुछ तो बढ़ा ही नहीं। Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. Wait, how much? भाग दिया भाई ये तो। ये क्या है? 1% भी नहीं बढ़ा। Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. बहनचू कितना गंदा काटा भाई ये, बहुत ही गंदा वाला। ये बैग का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? वहीं पे। चूतिया काट दी हम लोग का एकदम, बहुत ही गंदा वाला। मिलने दो बहनचू, इसका मर्डर कर देंगे हम। बिहार मोती बहुत मार मारते हैं उसको, बहुत ज्यादा। अभी को जेल में डाल देते हैं, हम अपने ही घर में बंद कर देते हैं उसको। जब तक चुकाएगी नहीं, जब तक देगी नहीं, सब लूटपाट कर लेता है हम उसी का। जो मतरा से डरा है ना, न्यूज़ का फाड़ के रख देते हैं। साला बताओ तो, 1 लाख का हवा खा गई। इतना बड़का एकदम बिजनेसमैन है वो। ऐसे धंधा चल रहा है ठगने वाला। कनिया मार लेंगे इसे, बोला।
Adventure time. Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. I would like divine knowledge. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el Ahmar. Ain el Ahmar? You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Well, we figured out where ये लहमार जो भी है वो साला ये स्कारलेट किंग कौन है? A picture. ये पिक्चर कहाँ है? ये फिर से स्कैम करेगी क्या? हमको लग रहा है हमको लग रही है फिर स्कैम हो तो बिग वाला We got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hand. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. 3 बजे आएंगे भैया 3 बजे इस अरे भाई गलत चैनल पे आ गया अरे भाई 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 अरे भाई 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 Oh, there he is. Sorry to keep you waiting.
Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. थोड़ा सा सोचे चलो आर्कन क्वेस्ट करिए लेते हैं, सब ग्राइंडेड है तो मैप ग्राइंड थोड़ा सा स्लो ही चलेगा, मैप वैसे करेंगे नहीं हम। अबे यार ये कैसा जगह है यार, एकदम घटिया जगह, इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करवा रहा है कि पेड़ है कि बहन जो चादर बिछा हुआ है, बताओ तो ये हरियर पहाड़ है कि पेड़ है, पता नहीं चलता। दुनिया जाद वाला अरकौन माँ करो मेरे मजे ही मजे हैं, ये कौन है? दुनिया जाद अभी एनलरिम कौन नाम है, अलहमीर उसके यहाँ कांड होगा। Hey, Thumb. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? दुनिया जाद को नहीं जानते ब्रो, अल हाइथम नाम है। I'm not going to mince my words. Once we're पुराना done वाला with सब you, भूल गए। you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Marupi. Gather! I will have order. Out of the frying pan. I'll be back. Follow orders, baby. Lucky today. Born of ice and frost. Take my leave. You. Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss? Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him! Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away! World, forget me. On this one. Huh? What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. OP! It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane.
The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? If the mantra took him away, then that means the Academia got the Divine Knowledge Capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the Divine Knowledge Capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the Divine Knowledge Capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery! I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. You have a point. Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Act 1 completed. एक चीज हमको नहीं समझ में आया, साला चोर कहीं का लाइतम अपने अपने मजा लेना चाह रहा। Sub-Zero's festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. तो पूरा नीचे कैसे जाना है? There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Okay, आइए दुनियाज़ाद. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia! You were eavesdropping! It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to relax. Even when you put it that way, it still doesn't feel right.
Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Rolling. Go to Dunyazad arrangement. तो बाहर चल देते। पर जाना है ना। Next. We're way behind schedule. वॉन्डरर्स के बहुत ओपी पाइस मिल है, बट मैं अपग्रेड नहीं करूँगा, तुम कर दो। चिड़ेगे शरत वामसी। वेलकम टू माय चैनल। हाय। डोरी से मिल लिए। डोरी स्कैम कर दी के का। काट गया। गंदा कैटने वाला है तेरा। कैट गया, कैट गया, कैट गया। कैट गया लो। लोल। अरे भाई गलत चैनल पे आ गया। दुनियाजार वाला आर्कॉन करो मजे, हाय मजे। दुनियाजार को नहीं जानते ब्रेह। अलहैद हम नाम है। चलो एंजॉय करो, मी आता जैब दुनियाजार। Born of ice and frost. Rise! Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh, no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. सुबह हो गया मामू, चलिए। यही था हम लोग का छोटा सा कमरा। Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora.
They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! Amal. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashifa mushrooms, lunar lotuses, Sumeru roses, sunsetias, kapulatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paima. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stalls? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? Pick yellow. Okay, one moment. Paimon wants to take a look too! Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. They say the Sub-Zero's festival was very lively a long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros would be just as impressive.
क्या ही सरदर्द है ये। Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda can. In the few short days it took to prepare for the Sabzeruz festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Siyan Ferris, Dard the abhi Night shuru of kaha Flowers, hua hai. I commend you on your contributions to the glorious Sabzeruz festival. सिरदर्द अभी बहुत टट्टी है बहुत। That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, बहनचोद horror नेट तो fruit, सही है चल रहा। sunsetia, Ooh, those all sound pretty good. and there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni Kabuto is a little spicier than Lizard Tail. सब तो सही है। You tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. मार रहे हैं सुसु करके। It's alright. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. आंसर है These पर boxes कोई of अलग candy are चुनो। numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attention! That's unfortunately lavender melon. Oh, Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. घंटा का फेस्टिवल है बहन। क्या ही बोले यार, ये कौन सा घटिया है भाई, बहुत ज्यादा घटिया है। ये क्या सबसे उस फेस्टिवल एकदम घटिया। अच्छा तो राइट फेस्टिवल था लियू वाला। We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? ये सब कुछ ही कर रहा है इधर बहन जो कैंपिंग कर अभी रहा है। बाकी भाई That most शेयर दर्द certainly शुरू is. होना। We're in luck. अभी She's walking बाकी right है। into our clutches. ये लो कैंपिंग हो रहा था इधर। Those Aramites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? हाँ भाई लो माँ ले लो। Dia the Flame Mane. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them.
Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. अब मजा आएगा। यही गेम प्ले। ये क्या भैंचम को भागने दिया जा रहा है? को भागने बोला जा रहा है। Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? Waleed, I'll be fine after some rest. welcome to my I'm more channel. worried about Dia. Waleed bhai, welcome stream ki hal chal? Very welcome to the stream, my friend. Oh, hello. GANYU मिली 30 पुल में. Congratulations, my friend. नहीं देगू दैया, अरे बहन के पगला. very congratulations वलीद भाई. GANYU की एकदम खतरनाक बिल्ड कीजिए आप. बवाल कर दीजिए हो. Don't worry, sis stuff. Yeah, don't worry. बातचीत क्या My हो रहा है? lady, traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. First time kill our conquest, It yes. can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarz? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? Truly. I'm sorry for the trouble, everyone. साला दोइया का फाइट सीन भी नहीं दिखाया बहन जो इतना कंजूस है यार. क्या ही बोले, बहुत घटिया काम किया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to... I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar! Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival.
The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? बहुत लंबा क्वेस्ट है लग रहा है हमको भी अब। As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? मैं खेल चुका हूँ Isn't the already. dance of Sub-Zero's about to begin? Very very That's the part of the congratulations. festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zero's festival will conclude amid everyone's applause and blessings. चलिए And नाच with that, होगा। my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. नाचोगा रे नाचोगा रे जल्दी से चलो रे करने से भूलना है रे कहीं छो अलग कौन सा रास्ता दिया है यार सर दर्द हो जाता है का मैं खोजित कहीं छो आदमी जाएगा किधर स्पॉइलर चाहिए नहीं चाहिए भाई ऐसा ही है स्पॉइल हो गए हम इतना ऐसा ऐसा क्वेस्ट दे दिया है तो आने वाला कि भाई Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros Festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zero's festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. If we force their hand too much, the situation may get ugly. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. कान में डंडा डारो मारो इनको मिलने लोगों नाचे नहीं दे रहे Pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. ये कौन है अजार the Grand Sage? ये कौन है बहन से मारो इसको? When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know?
And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zero so much. And I know how important this festival is to you. I don't want कहीं you to दूसरा have जगह any नाच होगा regrets. It's okay. चलो तंबू दूसरा Seeing जगह I लेंगे care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zero's festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But... you can sneak out for the next Sub-Zero's festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. 3 दिन रहती है अगला बार I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. ये दुख का है खत्म नहीं होता है बे उधर नाच देखने को नहीं मिल रहा है उधर गुजरनैली नहीं मिल रही है बताइए A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Yeah. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow from... ये क्या था ये कब चली रे कौन सपना हले We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Sure. फिर से बाजार घूमे अरे माँ की आँख गजब चुतियाप है यार गजब Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. फिर से अरे दुनिया आजाद काहे नहीं तुम हो जाती है आजाद This is a stall offering foods from the Hoftmeiwa feast. You are quite well informed, miss. मारे मुझ के बहन जी पागल हो गया है अमाल Plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Hoftmeiwa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zero's festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. है
बहन से ये तो वही है. Appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Is he really looking it up in a book? Oh, right. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. ये हो क्या रहा है? मतलब हम बैक आ गए हैं क्या टाइम के? को लगता है हम टाइम में बैक आ गए हैं. जो टाइम का खेला होने लगा है अब. All right, soldiers. Now that you have your Yalta candies, don't forget. Yes, Knight Ferris! What's going on? Is this a play? Ferris, the Night of Flowers, is another Subceres festival icon and... It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Night of Flowers. Oh, do you want some Yalta candies? I happen to have some boxes. What's to pick? Don't these boxes all look the same? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh! And there's also lizard tail and oni kabuto. Ugh! Why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon... Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you... Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right. Just now did I really mean to choose number 4? Huh? Are you saying that you instinctively chose the right... But now that you mention it, Paimon also had the feeling you'd choose the right one. Is that maybe we didn't sleep very well last night? Or maybe we slept too much? Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? The flavor of deja vu. चल क्या रहा है बीसी? टाइम के पीछे आए कि फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है सेम. A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us. So why'd you run here in such a hurry? I want to do something I normally never would. I want to see if I can get rid of this deja vu. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing?
beat it? Isn't this going a bit too far? 10 से ज्यादा बार रिपीट, अरे बाप रे बाप। How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu? छोटा मोटा स्पॉइलर चलता है स्ट्रीमर को डराने के लिए। बहुत गंदा वाला ये है भाई स्पॉइलर। 10 बार। हम यहाँ करने क्या आए हैं बहन? बस खा कर निकलने आया था यहाँ से। गजब है यार। कोई ना आदमी तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगा। कौन सा एंगल से ये सुमेरु का सोच के ये स्टोरी बनाया है? गांजा फूके हुए था का बहन का भाई, एक बार को 2 बार डाल देते हैं। Hey, Dinyarzad is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinyarzad. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and you've been looking forward to it so much! Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an तो end. पक्का पिटाएगा वो। लोग बोलते हैं कंटेंट नहीं है गेम में, इसलिए सुमेरु का क्वेस्ट ऐसे दिए हैं। करते रहो कहीं से कि देखो एक के दिन को जिए आप। It really is fine. I don't mind. I just experienced a number of strange events. I have noticed anything out of the ordinary. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. It's almost time. नाच Melee's देखने के dance लिए। of Sub-Zeros is about to begin. Let's go. अरे नाच नहीं होगा, अब ये तो देखें। वहाँ ये लोग एकदम बाबा जी, सस्ता मोदी, अब सुमेरु, एकेडमिया, अलबल पहुँची। With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later. Understood. I will inform. The Sub-Zero. करो स्किप। साला बाबा किया। Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the... It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. It truly is unfortunate, but... True, but... The next... Wait. No, nothing. I'll be Paimon can't believe what those heartless geezers did!
अबे स्किप मार कर पूरा क्वेश्चन याद रख वरना आगे पछताएगा। हैं? अबे स्किप मत कर पूरा क्वेस्ट याद रख। तो ठीक है जरूरी बात होगा इसका मतलब You still could. फिर से सूतेंगे फिर से वही दिन। Really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. ये कुछ करते हैं यहाँ फिर से। Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. दिमाग का बिरयानी हुआ। बिरयानी नहीं हुआ अभी चाउमीन हुआ है। गेमर फ्रॉम सोल बस बन ही रहा है। हाँ लग तो है एकदम एकदम एकदम। जाओ घूमने जाओ फिर से घूमने जाओ। अरे बहन के फिर से अबे यार गजब गांडू बनती है ये। Not at all. I'm doing well. Great idea. Let's get going. फिर से गांजा फूके हुए बोला ना 10 बार कर तो 10 बार से में ना होगा। पक्का इसको कोई गांजा पिलाया है रात में। It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the subs. Oh, are you interested in? It's not that simple. Each box contains a rat. And there's also... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Incredible luck. Number 1 is lizard tail. Paimon's not really in. Wait. How? What? That couldn't have mind reading? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? सुपर पावर मिल गया। कोई गांजा पिलाया है इसको। Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunya. कौन है ये? भागते रही कौन रे? अरे साला भागी थे कोई बचवा। अरे वाह बचवा कौन भागी थे साला वही गांजा पी ले लगा सबके। What are you looking for? Why did we? अब स्किप मत करना। Traveler? ये पहन चाहिए क्या है? That's. चिड़िया गायब।
पूरी साला यही है, मिल गई। ओ हो क्यूट डेंड्रो बच्ची, अरे यही है। Isn't that Dunyarzad? भाई जो सीधा टीपी मार दिल की यार। What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm अलर्ट। sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? ये चिन्हा है, let's use it together। This seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? Memories, so many days worth of memories। This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have 40th? we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was इसके as पास if a वो नहीं है, single sheet of डेंड्रो paper was वो नहीं है बे। separating those memories from your consciousness. ध्यान लगा के पार करो इसको अब। What is wrong with the A Dunyazad? familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. इसके पास नहीं है। क्या नाम है उसका? Looks like you're almost done sorting Reason. out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Nahida? In Nahida is it? Good. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem... Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, Samsara. me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface level help, बिल्कुल with भी bits of नहीं है। information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. Nahida साली She isn't doing well at कहाँ है यार? कब मिलेगी? illness gets worse samsara टाइम लूप, वो कौन टाइम लूप में डाला माँ की आँख? उसको मारो पहले। If we can गजब break out गांजा of the पिला रहा है samsara, सब। I might be good as things are right now. She's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her बड़ा fall. चीटिंग है यार ये सब। गांजा पिला देना सुतल में। Analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so टाइम लूप नहीं है ये। know so far. ये मेमोरीज है, मेमोरीज। Truth is, एक के मेमोरी में हम अटक गए हैं। Let me collect my thoughts। ये क्या है?
When you are in the stage camera, you choose entry and analyzes the text entry. You may delve new entries and upload submit calculation. ये क्या है? नो स्पॉइलर, खुद से सोचो, मेमोरीज नहीं है ये, टाइम लूप नहीं है, अभी वो नहीं समझेगा इसलिए टाइम लूप बोलो। अरे माँ यार, अब सीधा समझ रहे हैं, हमको कोई गांजा पिला दिया है और हम बार बार वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, कोई नशा लग गया हमको। ये क्या है? सिलेक्ट टेक्स्ट एंट्री, ये है। We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. इसकी वजह से तुमको स्किप मारने मना किए थे। अभी वो गांजा नहीं है, ब्लूटूथ में गांजा था। नहीं बे, संसारा। Please select another entry trigger association. तेजाब है? अब ये क्या गांजागिरी है? टाइम लूप। What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. और स्किप करो स्टोरी। That doesn't sound right. I need to carefully think things through. ये करना क्या है इसमें? अब इसमें करना कब चाहिए रे? इसमें हमको कौन गांजा दिया है उसको पता लगाना है। इसका डायलॉग था जो हम लोग के ऊपर था सही। क्या गांजागिरी भैंचोद इसमें दिया है। सबमिट, क्या करे सबमिट? That doesn't sound right. I need to carefully think things through. सोचना है। The moon, illusions, and lies. What do they all mean? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? And you go celebrate. ये इधर का वॉइस लाइन है, दूसरे कोई और बोल रहा। That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? A time loop. हो गया, कुछ हो गया। You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. तू हिंट न देबे तू अइले काला। Dunyarzad. The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. क्या है? क्या करना है हमको? क्या खोजना है? Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so
We must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with the stall owners? Ask around for clue about the current situation. टाइम लूप में तुमको लूप से बाहर निकालना है। ओ, हमको टाइम लूप से बाहर निकालना है। वो सबको गांजा नहीं पिलवाना, ठीक है। नशा मुक्ति दवाई देना है सबको, ठीक है। देने का कोशिश करते हैं। Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Have you felt anything strange lately? Do you ever feel like you are reliving the same day? Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. पूरा सुमेरुए सिटी गांजा पिए हुए क्या बे? लेकिन ये टाइम लूप नहीं है। तुम पहले नशा मुक्ति दवाई पी लो, सब ठीक हो जाएगा। What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. चलो, ये बोला हम गांजा नहीं पिए हैं। Is this a dream? Is everyone dreaming? Remember what he said just now. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. पूरा सुमेरु सिटी स्नूप डॉग नहीं है। बेंच तो वो क्या रहा है? Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? But I'm not sure it is related to your divination. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? What? We are all trapped into the day with the subservient. इसको ही बता देंगे तो गांजे पी लेगा, बोलेगा बहनचोद तू हमें धमकावे ले, दुकान बंद करेबे तू हमें। बेसिकली सब गांजा पिए हुए हैं, बट किसी को भी पता नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, किसी को पिला दिया है। ये सबको पते नहीं है बहनचो हो क्या रहा है। नहिदा को छोड़ के, ओके, नहिदा को छोड़ के हम भी गांजा पी लिए थे तो हमको भी निकाल दी नशा मुक्ति दवाई देके, ठीक है। You have actually divined our fortune many times. Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said... क्या बोले? Are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems.
We haven't made तुम अभी any भी नशे में हो? progress. अरे बहन चो, तू दवाई को उसी के दिल के जख रहे हैं। Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Please try to talking with her new. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. मार हुआ होगा वहाँ पे। हाँ देखो मार करके आई लो भाई सब। I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous A gang of kidnappers just has ambushed you. You just defeated a gang. Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Taiyyaar's glow for Claymore. ये है ठीक। Dia sold her greatsword to raise additional funds, and then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, traveler. You got injured because you were not used your current greatsword. You sold your greatsword. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. नहिदा जानती है दवाई पर वो हमको ढूंढने वो को बोल रही है। It's kind of hard to believe what you सब just told चुतिये me. है बहन जो First, सुमेरु में let सब me make स्कैमर something बैठा clear. ले रहा में। Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Have not you noticed something off? She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. हमको नशा मार दिया, हम जा रहे हैं भाई इंचो बैठने आराम से, नहीं तो हम My गिर lady, जाएंगे। are you angry? नहीं भाई जो ज्यादा नशा मार दिया है ना। Come with me, I will show you. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Piyush Gaming YT, hello, क्या हाल चाल है पीयूष? Welcome to the stream. नहीं ना खेल रहा है रे तुम, बहुत पिटाएगा। Bring दहिया to नहीदा, ठीक है चलिए। को भी थोड़ा बता दिया जाए कि गांजा का असर क्या हो रहा है इधर। तुमको पता नहीं है बट सुमेरु में जब तुम पहले कदम रखा है तभी तुमको स्कैम कर दिया था। ये कनमा में लगा के सबको गांजा पिला दिया जाता है नहीं, सही है। कान में दीजिए ईयर ब्लूटूथ, अब ब्लूटूथ के साथ कर दीजिए गांजा साथ में मिक्स। Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Ah. Hold on. Over there. Is that? You can see her. Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura.
there are also lingering feelings of something like regret or disappointment. टाइम लूप नहीं है ये What क्या है happened? फिर Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. बहन चो दिमाग का भाजी पाला है ये भाई दिमाग का भाजी पाला है ये You think the sages कुछ are भी नहीं हमसे चोखा हो गया Yeah, सब they've always been आलू against us. Wouldn't बहन चो surprise me आलू if they're मिर्चाई using the सब डाल Akasha दिया to है intentionally repeat the वो Sub-Zero's क्या रहा है festival ये as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Neither can you tell anything about the Akasha. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. एग्जाम चल रहा है तब सही है फेस्टिवल नहीं हुआ इसीलिए कोमा में चली गई वाह भाई हिंचू वाह She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. एग्जाम में पास नहीं हुए तो हमको घर से निकाल दिया गया था इसको कोमा में भेज दिया It गया compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Most information in the Akasha comes from Irmansa. Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? आज खेलेंगे आज देखो कम चांस है तेजा वो नहीं है abnormal fatigue people from Sumeru do not dream People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Information on Nahida the said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. मतलब ये क्या है इस लाइन का मतलब क्या है आएंगे देखा आ जाएंगे क्या है manifestation it compiles the wisdom of entire populace populace क्या होता है रे गजब गजब मीनिंग दे रहा है ये grants knowledge to the people abnormal My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. ओके सब लाइट में है सब में लाइट जल रहा है इसमें लाइट नहीं जल रहा है People in Sumeru don't dream. ओके तो ये कोई काम का नहीं है फॉर्मेशन आकाशा abnormal My fatigue mind feels exhausted, even though I haven't done too much. ये भी नहीं देजा वो नहीं यही होगा That doesn't sound right. I need to carefully think things through. यही You आंसर है mean the Akasha is causing our mental fatigue? दिमाग में पैदल कर दिया है आकाशा हम Now लोग that को I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? यस अब सही दिमाग लगाइए दैया Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that?
Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, तो क्या है सिचुएशन? Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. सिचुएशन ये है कि जो हम लोग को ब्लूटूथ दिया गया है, ब्लूटूथ से हम लोग को नॉलेज तो मिलता है, लेकिन वो नॉलेज के कारण हम लोग को नशा में डाल दिया गया है, ऐसा हमको लग रहा है। ठीक, और वो सारा नॉलेज जा रहा है किसके पास? सीधा कोई एक जगह होगा स्पेसिफिक, वहाँ पे वो है कुछ, वो वहाँ से कुछ ऑपरेटिंग हो रहा है, प्लानिंग चल रहा है। नहीं, गलत है। तब देखते हैं आगे क्या खुलता है राज। Somehow I don't think it will be that simple. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. सही बात है एकदम। लौंडिया ओपी, दहिया ओपी होना चाहिए। How does everyone feel? Actually, I also noticed something else. What is it? I feel like at the end of every day, there is always a sound of beep. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Yes! अब समझ गए, आधा सही 50%। वही ना हम बोले, कोई बहनचोद है इसके पीछे जो कि एक जगह से ऑपरेट करने का कोशिश कर रहा है आकाशा को पूरा। अब वही है जो आर्कॉन के बारे में हाइड किए हुए है, वो सब नहीं दिया गया है पावर वो सब सर्च उर्च करने का। कोई है हरामी एक नंबर का। That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. फिर से आ गया, देखो बहनचो ये कोई सीटी मारता है उधर। Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside बहनचो my कैमरा head. टेढ़ा क्यों हो गया We लेकिन? took off our Akasha terminals. कुछ तो नशागिरी हुआ है। Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. ये कौन है हरामी? We cannot lose all of our progress. दो आदमी बातचीत कर रहा है कोई। बीप। दिमाग खुला। Paimon remembers everything. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? बहनचो सही में। Again retry. हैं? We have been implanted with another form of the terminals. We failed at severing our connection with them. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. चांद है। Moon? Wasn't that the result of our divination? ये क्या है? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her.
If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. फिर से रिवाइंड हो गया। Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Are not you are still getting used your new great sword? Your unfamiliarity as well lands you some scratches. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. यार क्या सिचुएशन है अलमित भाई? टाइम लूप नहीं है, मेमोरीज नहीं है, ये क्या है? ये है पागलपंती इन सुमेरु सिटी, जिसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ गायब होके कौन कहाँ सूझ जाता है, उठ जाता है, फिर वही काम करने चल जाता है, उसको पता भी नहीं है कि हम कर कौची रहे हैं। During your battle, did anything feel strange? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. Yes. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? कहीं बहिंचो जो रुखा देवाता है उसको कहीं निकालने का फिर हम नहीं ना, फिर से जैसे कि वो चैल्डवा हरामी वहाँ कुछ ड्रामा कर रहा था जगाने के लिए कि हाँ हम 7 सीज को निकालेंगे फिर से, तो यहाँ पे भी रुका देवाता को फिर से रिवाइव करने के फेरा में कुछ मैथ उथ नहीं ना लगाया जा रहा है, मैथ ऑफ साइंस का प्रयोग किया जा रहा है, रिवाइविंग कुछ। Could it because removed your Raksha terminal? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Is it possible that we have already broken free? You're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. We will know first at the end of the day. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हर रात को एक्सपेरिमेंट करता है सब, जो वहां से ऑपरेट कर रहा है वो सिंगल पर्सन। It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been Peace bro, welcome to stream. क्या हाल चाल है? Hello bro, hello my friend. क्या हाल चाल? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. आज तक तो बाथरूम कर भी नहीं की सब। Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh?
People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I Duk-duk. suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that चलो जिम जाना है. ओके आपका आर्कॉन प्रोग्रेस डिग्री 5%. smart just a minute ago. चलो तब ठीक है. We are going to get some rest. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. फिर से बीप हो गया. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. रोज रात को ये सब गांजागिरी कर रहा है. We're still in the same day. As a better it's almost simple as I thought. You already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? The time loop theory is indeed incorrect. Why are you scrapping your previous theory? Jaya fighting a skill have been improving. Dunyarzad in list has also gotten worse. Oh yeah, you're right. Gosh, how did we not notice हाँ that? सही में ये टाइम लूप नहीं है कुछ और ही है. People's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Divinational. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? The moon, illusion and lies. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. दिमाग का बिरयानी हुआ. मेरे पास ऐसा कुछ पावर होता तो रात को बम बम कर देता, सुबह को सब भूल जाते. सही बात है, एकदम सही बात है. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. ओके तो हम लोग का ऐसा हमको लग रहा है कि जो यहाँ की कुजानेली है, कुजानेली का जीनोसिस ले लिया गया है और उसको कोई और चला रहा है, क्योंकि कंट्रोल तो उसी से करना है, जीनोसिस से ही. और उससे कोई डिंग ब्रिंग कर रहा है, अपना डिंग डोंग करने का कोशिश कर रहा है. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again.
If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. क्या मतलब क्या हुआ बे? ना आकाशा कुचनाली को पहले जो आर्कॉन थी वो बना के गई थी। अभी देखो फटुई गई। जिनोसिस का अभी कुछ नहीं पता। तेरे पास नाकासा कुचनाली के पहले जो आर्कॉन थी वो बना के गई थी। Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the Memories are deleted every day. Yes. रोज बहन चो डिलीट कर रहा है, नहीं डिलीट कर रहा है रोज दिन कुछ। We are not in a time loop. Instead, our memories are being erased at the end of each day. Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. Okay. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. अब समझ में आया। डेंड्रो आर्कॉन का जेनेसिस डेंड्रो आर्कॉन के पास ही है। जेनेसिस Tell us if we're right or wrong. देखो एक चीज हमको पता लग रहा है। It's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. क्योंकि क्या करता है जो हम लोग पहले का जी लिए हैं जिंदगी, ठीक है, मतलब कि आज वाला जो स्टार्ट हुआ रात तक हुआ, फिर आज वाला पूरा डिलीट कर देता है, पूरा सिटी के लिए, मतलब पूरा सुमेरुए के लिए डिलीट कर देता है वो। तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे आता ही नहीं है। सबको लगता है कि हम पीछे ही वाले रात से जगे हैं और चलिए आज एकदम होगा नाच, एकदम नीलऊ का चलेंगे देखने। पता चलता है ले नाच होगा नहीं। ठीक है, ये है साइंस यहाँ पे। ये चूतिया बना रहा है कौन बहनचो? रोज एक के दिन कितना जिएगा आदमी भाई? जिंदगी भी है आदमी लोग का, आगे जीना है। बच्चा उच्चा कहाँ से होगा? जवानी एकरे में बीत जाएगा, बताओ। Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. ट्यूटोरियल आ रहा है, बढ़िया मास्टर प्लान बनाया होगा जिनोसिस के लिए। हाँ अब ये ना मजा आएगा। अब समझ गए हम क्या चल रहा है। ग्रैंड सेज कर वहां रहा ये सब। तो वो चूतिया ओके नहीं, ये भी नहीं ठीक है। There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! नहीं था ट्यूटोरियल में शॉल ट्री जला रहा था। Tell anyone about it. क्या चुतिया आप कर रहा है? गेमर फम्सुल को बैन करो पहले। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ का बात घुसा दे रहा है। जिसने फेस्टिवल रुकवाया वो करवा कर दो भाई, कर दो। इसीलिए हम बहन चुत नहीं करते हैं ये सब। हम अब ऑफ स्ट्रीम में ये सब करेंगे। गजब है भाई, ये सब कहीं जिंदा नहीं छोड़ो हमको। They don't actually need to explain everything. Let's just पीसी ट्रेलर नहीं था, आज ही देखे ट्रेलर। गजब है भाई। What happened? एक महीना होने वाला है ट्रेलर का। Did you get brainwashed by some cult? याद नहीं है।
think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. ये भी सही बात है. But if the sages were behind this, if they utilized the entire city's resources as well as information supplied by the Akasha. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. बहनचो ये सब रोज करता है भाई. अबे फुल स्पॉइलर नहीं है, 50 पॉइंट दे तो दे तो दिया नहीं यार. कितना मजा आ रहा था, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था. एक भाई के धीरे धीरे खुलते जा रहा है. लेकिन बहनचो ये जो कर रहा है, जो तुम बोला सेज है, वो रोज ये सब माल पानी को मतलब सही करता है. जैसे कि रोज हुआ ठीक, आदमी सिर्फ जिंदगी ना कर रहा है, वो मतलब अपना लाइफ को सिर्फ वो एक डे समझ के यूज़ कर रहा है. लेकिन जो रियल चीज़ है, एज जैसे बढ़ेगा तो वो बढ़ना ही है. पेड़ पौधा उगना है तो उगना ही है, वो सब तो होगा ही ना. चिड़िया उड़िया वो सब है, वो सब थोड़ी यूज़ करता है कासा. तो वो सब जो रियल सिंगिंग है, वो सब के लिए तो नेक्स्ट डे होगा ही. जो चिड़िया को यहाँ से उड़ के जाना है 2 किलोमीटर आगे, तो वो उड़ के चला ही ना जाएगा कि वो वही उसके चक्कर में यहीं पे रह जाएगा. फिर से वो बहन जो फिर से चिड़िया को पकड़ के लेके आ जाएगा यहाँ पे. बहुत गंदा प्लानिंग किया हुआ है, बहुत ही गंदा. बताओ, इतना मेहनत बेकार ना कर रहा है, आगे ज़िंदगी जीने दे देता. कुछ आगे नेक्स्ट डे होने वाला है क्या? हमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे कुछ होने वाला होगा, या फिर कुछ अलग ही चीज उसी के कारण. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. कुछ तो कांड कर रहा है सेज लोग, बहुत बड़ा कांड कर रहा है. पूरा सिटी का अब जो सामान आज फल लेके आया है ठीक, वो फल सड़ जाएगा. 1 दिन बाद सड़िए ना जाएगा. तब वो बहन जो सामान को वो फिर से वहां से इम्पोर्ट करा के. क्या है भाई, मेरे अंदर से तड़प हो रहा है बताने के लिए क्या हो रहा है. नहीं बताना है, लेकिन मेरा दिमाग अभी जितना तक गया है वहां तक. ठीक है, हरी से जाते हैं. नहीं बताऊंगा. ठीक है, मतलब जो बता रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ वही चल रहा है, सिर्फ आदमी लोग का ये दिक्कत है मेमोरी का, कि मेमोरी उड़ गया. तो मेमोरी उड़ गया तो वो दिन आया ही नहीं, तो वही दिन हम लोग जी रहे हैं. एक तरह से वो है. अब जैसे हम सैटरडे को सो गए ठीक, और नहीं जैसे संडे है, संडे को गया घूमने उमने सब कुछ. संडे को घर में रहा, गेम उम खेला, सो गया. फिर से तुम्हारा मेमोरी उड़ा दिया गया. तब फिर तुम उठेगा नेक्स्ट डे, वो रियल में लेकिन मंडे है, लेकिन हम लोग उसको जिएंगे संडे की तरह. वही ना हो रहा है मतलब. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days worth of practice. Okay, रोज practice कर रही है. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control.
सही ट्रैक पे हो तुम स्टोरी के ही हिसाब से। तुम स्टोरी के आगे थोड़ी चले जाएंगे, जो समझाया है अभी तक वही समझेंगे The ना। force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be— Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. तो मतलब ओके ठीक है, वो सबसे तो आकाशा से सब कुछ उसको पता चल ही जाता है एक तरीके से कि आदमी क्या क्या किया पूरा डे में, पूरा मतलब सबको तो पता चल ही जाएगा। It seems we will have to abandon this theory. That makes Hope that sense. cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you एक later. काम करता, इसके में एक और छेद कर देता कहीं और से, साइड से घुसा के तन्नी को एकदम छोटा सा निशान बना देता अपना, एकदम कोई अपना पहचान। ओके, लेकिन पहचान बना देगा तो वो भी तो वो जान जाएगा। But at least we've reached some other conclusions in the meantime. We are not in a time loop. We are not in the real world. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? पैंचो, ये मेरा थ्योरी को भी गलत कर दिया। दे या मम्मी ना हॉटी तो क्या वो होता हमारा। Let me think. I suddenly realized that something is strange. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. How come we have never thought about leaving the city? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Okay. I can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? तो ये दो कारण पूरा गलत नहीं है। तो एक चीज़ है कि अगर हम इस शहर से निकल जाएंगे, अब फिर से अगला दिन आएंगे, तो ये सब जी रहा है कि नहीं जी रहा है, बाहर से पूछ लेंगे जाके, हम शहर से बाहर जाके पूछ लेंगे, कारे कल जीते हैं सुमेरु वाला में फेस्टिवल में, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि बाहर में भी ये कांड हो रहा है कि पूरा सिर्फ सिटी में हो रहा है। It is really strange. We should have thought this long time ago. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. कि निकले नहीं देगा हम लोग को। रात हो गई बहन, इतने करते करते रातें हो जाए, फिर सूत जेबे, फिर उठ जेबे, फिर वही दिन आ जाए, तो जब हो जाए। गलिया नहीं सकता है यार, पूरा ब्लूटूथ जो दिया है उसी में गलिया दो। अरे बहन से बंद करना रही, सब जान गए तुम्हारा क्या कांड कर रहे हो तुम लोग। बोल दो सीधा ब्लूटूथ में। Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. प्रभास भाई वेलकम स्ट्रीम, क्या हाल चाल? वेरी वेरी वेलकम स्ट्रीम। हेलो प्रभास भाई। भाई हिम्मत है तो सुमेरु के बाहर टीपी मारने का कोशिश करो। ओके ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। हैव वी एवर ट्राइड लिविंग द सिटी? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked बस about लाइक those मारने plans? आए, लाइक करने आए। ओके भाई, वेरी वेरी थैंक यू फॉर द कमिंग। प्रभास भाई ये तो मैं भी ट्राई नहीं किया। You ever actually मारो told me तो what the टीपी, हम भी outcome नहीं ट्राई was. किए। चलो मारते हैं। Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time I didn't think too much about it.
क्या हुआ अभी मिस कर गए? It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Let's try again tomorrow. Maybe this is the key. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the... फिर से उड़ा दिया बहन चो सेव। देखो यार, इस सेव है करप्ट कर देता है, बार बार डिलीट कर देता है। Our memories are back! Let's go try another episode today. About that... Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Another message from who? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Yeah? Cannot go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. ये क्या है? बिरयानी बन गया। अरे ये क्या है? ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काउंटलेस स्पेसेस हियर। ये Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. 2 दिन पहले। It's time to carry out our plan from yesterday. We would have the living today. Let's go. Note that leaving this area will interrupt your story experience. This may affect your current quest progression. अबे ये तो उड़ा देगा। ओ भाई 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 भाई। ओके, मतलब बाहर जाने का ही ये है। सिटी के बाद बहुत सारे लूप चालू होते बोल रहा। ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन हमको लग रहा है कि सिर्फ सिटी में ही है कुछ खास, क्योंकि बाहर जाने पे बोल रहा है कि तुम्हारा क्वेस्ट गायब कर देंगे, फिर से करना तुम बैठ के, समझा? इसीलिए हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं, एक चीज़ को दोबारा रिपीट कर करके, तो वी विल नॉट ट्राई दिस। Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. समझ गए, भोसड़ी वाले तू ही है। It looks like the academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. तो यार We just कौची received an करते order हैं? that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Of course, the academia would not share their plans with a pawn, so the academia does not trust you at all. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. ये नहीं है बीसी। अरे ये तो नॉर्मल बंदा है। Really doesn't know. कूद जो नहीं यार बाहर। Can't get उड़ anything सके, out of कूद him. ना सके। Let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? हाँ। Those guards can't be everywhere at once. पहाड़ चढ़ गई, ड्रैगन स्पाइन चढ़ गई, सब चढ़ गए। Notice us at all. देखो पर ये दीवार नहीं पार किया जा रहा। Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Leaving the city by might trigger disruption to our memories.
We need someone to stay and witness event from this side. Yes, सही बात है. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? लॉकडाउन लगा दे. भूतनी के थोड़ा कॉपी किया गया है ना जुमा से. सीधा लगा दो लॉकडाउन. If we live together, it will just be the same as before. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. पहला बार पाइमोन और एमसी ट्रैवलर हुआ है अलग. ये क्या हुआ? Let's go and try to leave the city today. ये क्या हुआ? What is the wrong? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. What did I... Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Although I don't remember doing anything of this, I would not leave you behind. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay. ये गया आ गया Paimon, कहाँ? can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. You sure that's what you saw? You were not zoning out or... No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? Yes, I don't have no yesterday exist. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? बहनचोद, तब जाकर थोड़ा मोड़ा गया. ट्रैवलर का सब मेमोरी गायब. सब मेमोरी गायब? कौन सा? So they did not just restrict access to the Sumeru city, they are also erasing the memories of those who live. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. If our memories will be erased, can we leave behind something other than memories? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. जिस दिन सुमेरु सिटी लीव किया उसी दिन का मेमोरी गायब. ओके. ये क्या हो रहा है? आई दुनिया जात कोमा में चल गई. कैया उठती यार. एकरा लगी तो सब दिन एके है. हमको लगता है दुनिया जात के साथ कुछ स्कैम हुआ है, इसीलिए कोमा में गई है. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida,
You really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. I still think they should stay. All right. Paimon isn't अब as टिप्पी worried मारने की about being कोशिश करना separated since it मोनस्टाइड या happened लियो once में yesterday, but Paimon still एडवांस्ड isn't happy ब्लूटूथ about it. यस Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. so that message was what I left for myself when I left the city. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. क्या मैसेज है यार सुनाओ तो Can't दिखा go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. ये क्या था That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird content. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. जानबूझ के उड़ाया It should था have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Spaces without human preference. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? Catastrophic. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. My impression is that each day is the samsara only. ओके लास्ट वाला क्या हो सकता है कि हर एक के बाद जाता है ठीक है हर एक मतलब ढेर सारा स्पेस था ना फाइनल स्पेस क्या है All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Lack of human presence मतलब कि जो ये बाहर घूमने गया तो उधर लोग कम था नहीं वो एक काम हो सकता है या तो वो रियल वर्ल्ड हो सकता है Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like... सेकंड क्या बोला Was that space actually the real world?
But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? नहीं समझ में आया हमको। लोग था बट उनका पपेट था। पपेट था। ये क्या चुतियाप है, बाहर में उसे पपेट काहे घुमा रहा है बना के? वो पपेट बनाने का रीजन क्या है? पपेट बना रहा होगा तो जो ओके। My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. ये भी बात सही है कि जो डिलीट करता है तब बीप आता है, उस समय खुच आया था। The final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? वलीद भाई तुम कर लिए हो ना अर्कन क्वेस्ट? वलीद भाई कर चुके हैं। At its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. रुको सुसु करके आ रहे हैं। कितना परसेंटेज पार हुआ ये बताना तो सिर्फ। हाँ चलिए क्या है 80%, 70%। बस अलमित को पूछ रहा हूँ। सही है, ऐसा ही पूछेगा तो ठीक है, तब ना मेरा भी रियलाइज होगा कि हाँ हम क्या समझे हैं अभी तक। जो छूटा हुआ होगा वो भले बता देना। हाँ सेंस बुक सेंस लुक से सरफेस में भी पॉइंट ऑफ एंड इज अ स्मॉल एंड सिंपल सीक्रेट। Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Wow, the Archon War, that's an analogy and a half. Give me some time, I need to organize my thoughts. Hey, where are you going? तब आर्कॉन वार से क्या रिलेटेड है? आर्कॉन वार से रिलेटेड है तो यानी रूका देवता का कुछ बातचीत होगा। तुम अभी कहाँ हो? अभी यहीं पे है। टीपी। अबे यार हम तो टीपी मारे यहीं पे आ गया। ये शाम हो गया। The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. The dance of there's the time already. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away.
आर्कॉन वाले से उतना रिलेशन नहीं है, किसी स्पेस में हो, टाइम लूप में हो या मेमोरीज में हो। हमरो दिमाग के दही हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा पता चल जाएगा। What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. एक चीज कर सकते हैं हम लोग, तो उस समय आता है ना सेजवा, तो सेजवा का पीछे करते हैं हम लोग। वो जाता डिलीट करने फिरो तो उसको पकड़ लेते हैं। अरे नहीं दे रहा है बे, सुमेरु के बाहर, सिटी के बाहर तो दे ही नहीं रहा है। होमस्टेड में घंटा देगा। ये अच्छे से हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सिटी के तो बाहर टीपीए नहीं मारने दे रहा है, तोरा सीधा मोन्स्टर्डे पहुंचना है। मार देंगे तो सारा उड़ जाएगा, तो फिर से हमको स्टार्टिंग से कंटिन्यू करना पड़ेगा, समझा? अब वहीं पे हम लोग जैसे कि हम टीपी मार दिए तो वो नॉर्मल ग्राइंड वाला जो है वो वैसा ही रहेगा। स्टोरी से उसका कुछ रिलेट नहीं है, हम स्टोरी से बाहर चले जाएंगे, समझा बात को? वो चीज़ हो जाएगा। अब फिर आएंगे वापस स्टार्ट करने, तब फिर वहीं जो चालू करो वही चीज़, डेली 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 वाला। You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है कि नशा मुक्ति कैसे होता है? Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Formation of the Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Okay. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. We have already festival many times, and the day perpetual samsara. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. सब आदमी तो यहाँ है। The moon, illusions, and lies. What do they all mean? मतलब ये तीन। People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Nvidia forest, except these have no sign of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Vidya forest, except these have no sign of human presence. People from Sumeru do not dream. Selecting an entry to trigger association. The truth behind the यही है। We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream, rather the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in dream Sumeru सपना है भाई, डेजा वू सपना। We're all in one big dream together सपना right now. अभी हमको क्लियर नहीं हुआ। Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The
The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Take a second. It compiles the wisdom of the entire populace. It is the manifestation of the God of Wisdom. That doesn't sound right. I need to... Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paima remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Yes, and they don't intend to stop there. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed the Akasha terminals. ड्रीम में हो अलमित भाई, अब हमको लग रहा है हम असली के ड्रीम में। बहनचोद इतना ही हम कर दिए क्वेस्ट कि हम ही ड्रीम में चले गए हैं। Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual Those spaces kept disappearing before. That doesn't sound right. ऐसा साउंड सब इसी के साथ। अरे बहनचोद, mass production of dreams. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zeru's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zeru's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. रुको, वो कॉल आ रहा है। हाँ, फोन कर रहा था। फोन नहीं कर रहा था, लग गया रे काम। हाँ, क्या हो गया काम? हाँ, पुलिस ने गया, पुलिस चल गया, उधर को लेके लगा। तो गए थे कि नहीं गए? व्हाट्सएप पे बात किए तो बोला कि बात कर। ठीक है तो। हाँ चलो, क्या था?
कुछ समझ में तो नहीं आया। So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? The moon, the illusion, the lies. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think... They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? पहंचुदी पूछ ली कौन है ये तो कौची बोलते Now that I think about it was not illusions hinting at the sages deceptions of Sumeru's people. So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. अबे मेरा चैट पढ़ो ब्रो मेरे साथ मेरे को ड्रीम में हो अलमिज भाई आप नहीदा को पुल करोगे क्या? एकदम फिक्स है भाई। आकाशा सबका ड्रीम को चुरा ले रहा है और सबको ये फेस्टिवल का ड्रीम दिखा रहा है। आकाशा ब्लूटूथ भाई ट्रैवलर ड्रीम में है इसलिए सब कुछ रिपीट हो रहा क्योंकि तुम ड्रीम में हो। जीप चुतिया पे लेकिन स्केमर फ्रॉम सोल सब लिख दिया वो सब जो वो नहीं समझा वो ही लिखे हैं। अरे वही अब ये अभी भी कंफ्यूज्ड है। अबे यार बीसी चैट पढ़ो स्टार्टिंग से। आकाशा सबका ड्रीम को चुरा ले रहा है और सबको ये फेस्टिवल का ड्रीम दिखा रहा है। वहीं जो जब वो देख ही नहीं रहा है सपना तो चुरा कहाँ से रहा है? जब देखेगा तब ना। बोला है नो वन ड्रीम तो सुतबे नहीं करता है आदमी। 1 मिनट सब देख रहा है सपना तभी सब सुतल है कि जग रहा है? अबे सब लोग स्लीप में है। सब सुतल है तो जिंदा कब कखने है मतलब उठा हुआ कब है? उनको चुरा ले रहा तो देखेंगे कैसे? उसको स्पॉइलर हो जाएगा एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक है रुक जाओ पूरा करने दो तब हमको अच्छा से समझ में आएगा नहीं तो ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। Those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. तो कोई चिंता नहीं है क्या रे? स्पॉइलर हो जाएगा एक्सप्लेन करूंगा तो पहले ये बताओ ये चुतिया पर स्टार्टिंग से हो रहा है। बहन कोई कुसानेली को आज तक देखा नहीं है क्या? वैसे कुसानेली मिल गई। हाँ यही है हमको लग तो रहा था यही है। तुम थोड़ा सा शक कहरा दिया था लेकिन हमको
60-80% चांसेस था कि यही है, 20% से हम थोड़ा भटक रहे थे, लेकिन अब 100-200% हो गए यही है, क्योंकि अपने मुंह से बोल दिए। Why could not you simply tell us the truth? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. नहीं, कुजानली को कोई नहीं देखा है। How do you sages manage to keep people from noticing this? Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Subseru's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Subseru's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. ये सेज का विजडम है, लोग का ड्रीम्स चोरी कर लो। इतना घुमाई, ये पागल बच्ची को कोई और तरीका नहीं मिला। Everyone else has no idea that they are in the Subseru's कुजानली festival सपने में ही samsara. दिखती है। All their dreams are stolen from them over and over again. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so... We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate, especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Why is the dream about the Subseru's I festival? know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Dreams with no human Those presence. spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Celebrate the birth of that god? Could it mean... Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Subseru's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Subseru's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes.
Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's Festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, हो गया. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it.
However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. So we find the host in what? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Knowing the plan, they would probably become aware that they were dreaming, and an unsuspecting host would be less likely to realize this is a dream. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Maybe Faris, the Knight of Flowers, the one with the strange hit-up. Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the wholesome Zeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, कौन है? सारा चैट पढ़ते हैं अभी। ये पागल बच्ची को कोई तरीका नहीं था, जैसे जो वीडियम है, विजडम है, लोग का ड्रीम्स चोरी कर लो बिकॉज दे हेट कुजैन अली कंफर्म प्रीवियस आर्गन डेड। बोली नहीं, सन हैज गॉन, मून इज न्यू। हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, 85% हो गया है। बताओ कौन है ये ड्रीम का होस्ट? कुजान अली भाग रही है। कौन है अलमित भाई? दुनियाजाद भी नीलो सी दहिया डी सेजेस। सही जवाब दिया और 1 करोड़ रुपए जीते। मैं दूंगा न्यू आईफोन। रात को होगा स्ट्रीम। 95% हो गया है, रात को होगा स्ट्रीम। यस, अगर उन चारों में से तुम नाम बता रहा है, दुनियाजाद, नीलऊ, दहिया और सेजेस, तो हमको लग रहा है कि नीलऊ है, क्योंकि वो साला पगला नीलऊ को ही आके बैन किया है। ठीक है, इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है। क्या सही बात है कि नहीं ब्रो? Maybe. Max. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत Gamer from Seoul. Welcome to my channel. Waleed. Welcome to my channel. सही पकड़े हैं। चलो एड्रेस दे दो, मैं न्यू आईफोन भेजूंगा। देखते हैं साले, 1 करोड़ जल्दी दे।
1 करोड़ जल्दी दे। एड्रेस डीडू में न्यू आईफोन भेजूंगा। आईफोन देखते आईफोन आईफोन दे देगा। पैसा भेज दे, सिर्फ आईफोन नहीं देना हमको, पैसा दे देना, हाफे दे देना, आईफोन का आधे पैसा दे देना हमको। चलो ज्यादा लालच नहीं करेंगे हम। तुम 1 करोड़ देने वाला था ना, तुम 10% दे दो हमको, ठीक? 1 लाख दे देना हम, ठीक है? 1 करोड़ देने वाला था। साला खेत बेचेगा कि घर बेचेगा अपना? 1 करोड़ देगा, देख रहा है सीधा। अरे इतना भी नूब नहीं है, नूबड़ा गैंग का लीडर है, बट इतना अभी पता थोड़ी चला रुक। अभी पता थोड़ी चला रुक, क्या बताए नहीं? एक तो ये बहन चो टीपी नहीं मार सकते, अलग ही गांजा फूक के ये चलवा रहा है हमसे। कोऑप भी बैन होगा। यस, कोऑप भी बैन ही है। बीस्ट भाई दे दो एक। देगा देगा, वो देगा। 10% देगा ना रे? 10% मांग रहे हैं हम अपना प्राइज मनी, 10%। तो उसमें भी बोलेगा कि 1 लाख दीजिए, हम आपको 2 लाख देंगे, अपना अकाउंट ये वो कीजिए। जो आता है मैसेज, हमको 1 हफ्ता पहले मैसेज आया। चलो अब गेम बंद कर दें, थोड़ा सा बातचीत बस। अब हम बाहर भी नहीं जा सकते, पूरा अर्कन क्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चलो रात में आके इसको कंप्लीट कुछ कर नहीं देते हैं। मिलेगा, चीटिंग किया है। कुछ नहीं मिलेगा, चीटिंग किया है? क्या चीटिंग की है बे? क्या चीटिंग की है भाई? गूगल की है? गजब आदमी है ये। क्या का चीटिंग की है बताओ? कुवैत से मनी ट्रांसफर के लिए बहुत चार्जेस लेते हैं। कुवैत से मनी ट्रांसफर के लिए बहुत चार्जेस लेते हैं। ओ, मनी ट्रांसफर के लिए बहुत चार्जेस है। कोई बात नहीं, हमको चार्ज लगा के जो बचे खुचेगा वही दे देना। गूगल किया। गूगल किया? कहाँ से गूगल किया बे? गजब है भाई ये तुम भाई बीस्ट। स्कैम ना किया करो, तुम भी सुमेरु वाला आदमी बनते जा रहा है, ठीक है? गूगे किया। गूगे किया? गूगे क्या होता है? मोबाइल से से गूगल किया। गूगल गूगल किया किया गाइस ये। साले क्या गूगल किए होंगे बताओ तो, रुको अभी करते हैं हम गूगल। बेंच क्वेश्चन पता ही नहीं है, अब गूगले कर लेंगे हम। वाह, क्या ही सोच है तुम्हारा। क्या है क्वेश्चन बताओ? चीटिंग किया। चीटिंग किया? बेलिया इसलिए चूज नहीं किया। चीटिंग करता है तू। डीबी सुपर। चीटिंग 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 करता है तू। क्या क्वेश्चन क्या है? गेमर फ्रॉम सोल यू सक्सेसफुली ये ऑप्शन दिया सिर्फ बस। क्वेश्चन है, हमको नहीं पता है, हम सर्च क्या करेंगे ये बताओ। क्वेश्चन लिखो पहले फिर से, तब। जनता माफ नहीं करेगी। ओके, जनता माफ नहीं करेगी। डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट हुआ है। रिडीम्ड जनता फॉर मोरा। चलिए गाइज, तो आज बहुत मज़ा आया है, लेकिन आर्कन क्वेस्ट में दिमाग का भाजी पाला चोखा चटनी सब बना दिया एकदम। लास्ट में भी जाकर थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है हमको। ये सुमेरु के जो सपना है, सपना वाला हमको ठीक से अभी हुआ नहीं है। ये चल क्या रहा है मतलब? पता तो चल गया सपना में, तो वो क्या है? मेरा आर्टिफैक्ट रोल करना, ठीक है कर देंगे हम। मेरा आर्टिफैक्ट रोल करना अभी भी ठीक से समझ नहीं आया हमको कि मतलब जो सपना चल रहा है वो पूरा तरीके से नहीं समझ में आ रहा है कि सपना है, सब सोया हुआ है, कि सब बहन जो कोमा में जा चुका है, सुतले है एक तरीके से, या फिर सब नींदे में है। सब लोग नीलों के ड्रीम में फंस चुके हैं। सब लोग नीलू के ड्रीम फंस चुके हैं। नीलू का क्या ड्रीम है ये नहीं समझे हैं कि देखो सब सोया हुआ है, एक तरीके से बोलना चाह रहा है कि सब सोया हुआ है और सब नींद में चल रहा है, नींद में है सब। नींद में हाई है सब।
जब चुतियाप है, लेकिन मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही अलग चुतियाप लेवल का है। नींद में चल रहा है, अबे नींद में चलता है तो कोई बात नहीं ना करता है, चलते जाता है, उन्हें ठोका जाता है, उन्हें गिर जाता है, उन्हें पड़ जाता है, फिर आके सूझ जाता है। ऐसा ना हम लोग देखे असली हैं। मिन सपना का महीना समझ लो। असली 5 मिनट सपना का 1 महीना समझ लो। जब ये कौन सा मैथ पढ़ा दिया हमको, नहीं समझ में आया, पूरे नहीं समझ में आया। तो नींद में है तो नींदे में वो सब बातचीत कर रहा है, नींदे में बातचीत कर रहा है, नींदे में सब कुछ कर रहा है। तो सेज जो है वो चुतिया से सपना में कैसे आ गया? नहीं, सपना में वो तो आ सकता है, मतलब कि ठीक है वो सपना में चल रहा है, ठीक है। तो रोज एक ही चीज हो रहा है, तो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? जो वही था, सामान का पैसा घट गया, खाना घट गया, वो सब खाना बर्बाद हो गया, टॉफी बर्बाद हो गया, जो है वो सब अलबल, तो वो कहाँ से मेंटेन हो रहा है? सेज है ही नहीं सपने में। सेज है हाई नहीं सपना में। ठीक है, सेज नहीं है, जो वही था। जो वही था, ठीक है वो सपना में नहीं है, श्योर हैं हम भी। तो अपना पपेट भेज दिया है, अपना पपेट भेज दिया है। सपना है बीसी। सपना है बीसी। बहिनचोद यहाँ चल क्या रहा है? पपेट पपेट चल रहा है, दिमाग का फिर से भाजी पाला हो गया मेरा। सब आ जा रहा है ऑटोमेटिकली। सब आ जा रहा है ऑटोमेटिकली, यानी कि सब सपना में भूख कैसे लगता एच? सपना में भूख कैसे सपना में दिमाग यूज करो। दिमाग यूज करने के लिए बचा नहीं है अब, जितना ये यूज करवा चुका है, ठीक है। बहुत दिमाग यूज करवा लिया, अब बचा नहीं है कुछ भी। बहन जो आके रिक्वेस्ट कर लेगा ना, वो 2-3 दिन तक कुछ कर नहीं पाएगा अपना दिमाग का यूज, सही बोले तो। पपेट भेजे क्योंकि वो नीलू के ड्रीम में ना फेस। हो। बहनचो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं सब समझा दूंगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में सब क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। आज का आर्कन क्वेस्ट क्लियर होगा और टेंशन मैट लो। खत्म, ठीक है। चलिए, तो हम दिमाग से सुमेरु निकाल दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, अभी रात तक रखेंगे, फिर रात के बाद खत्म होगा तो सारा भाजी पाला हो जाएगा एकदम कुकिंग फूड जैसा, एकदम खाएंगे गायब कर देंगे, ठीक है। फिर वो कर देंगे, डुक डुक कर देंगे। चलो बाय बाय, सी यू सून गाइस, मिलते हैं रात में। हैव अ गुड ड्रीम। अबे अभी कहाँ से सोने जाएंगे, रात में जाएंगे, आते हैं। गुड ड्रीम। अलमित भाई, गौतम थवानी, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम। रुको जाने साइम, रुको, खाते खाते दिमाग लगाना। बाय। नहीं लगाएंगे, अब कुछ भी नहीं लगाने वाले, हम सीधा डीबी सुपर में जाएंगे खाना खाते समय। खाते दिमाग उधर अल्ट्रा एक्सटिंक्ट मारेगा गोकुआ डीम डीम। एगो अब ज़्यादा बचा नहीं है, 10 एपिसोड है, तो अब मेन सिर्फ है करेक्टर। मज़ा आएगा डीबी सुपर में। एक काम करो, गानियो पुल कर दो, C6 सुताओ नहीं करूँगा। एक काम करो, गायनो पुल कर दूसी होताओ नहीं करूँ जिए। कल अभी टाइम नहीं है, 10 बज जाएगा, पुले करते रह जाएंगे, तुम मेरा पुल खुलवा देगा। बहन चुद ने कुछ किया है ना, खाना बनाया, कर कौची रहा था। कल शाम को अच्छे से करते हैं पुल, एकदम खतरनाक वाला। फ्रीजा आखिर तक जिंदा रहेगा। फ्रीजा तो कुछ कर ही नहीं रहा है यार, तमाशा देख रहा। आखिर तक जिंदा रहेगा। नहीं 10 पुल में मिल जाएगा। अरे तो कल करेंगे, थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे हाइप रहना चाहिए। अब तुम अभी आया, फुल कर देंगे, निकल लेगा सब। कल रहेगा तो एकदम सोच के आएगा, एकदम हाइट गानियो पुल है ये। पावर बचा रहा। फ्रीजा पावर बचा रहा। भोसड़ी वाला एक फाइट भी किया है क्या? साला गोकू का गांड फट गया, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तो जिंदा है, वरना जीरेन जी मार लेता। वरना जीरेन जी मार लेता उसकी। आप क्या बोलता हो? C6 सुताओ, ये 6
6 डिफरेंट कैरेक्टर ज़्यादा क्या है? प्रेफरेबल है होता उसे, क्योंकि हाउ कैरेक्टर लोगे तो वो पूरा टीम बना दोगे। डेंजर डेंजर। C6 करोगे तो उसके लिए तुमको आर्टिफैक्ट चाहिए होगा, क्रिम्सन वाला डेंजर। सिर्फ C6 से तो मज़ा नहीं आता है, आर्टिफैक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 कैरेक्टर होगा तो अलग अलग का भी तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट होगा तो मज़ा आएगा खेलने में। वैसा नहीं है, एक एक कैरेक्टर को C6 कर लोगे, R5 कर लोगे। EP 1 to 9 सबसे एपिसोड जोड़ सबसे EP है। जॉर्ड एपिसोड है, तब तो मज़ा आएगा। अब सारा एपिसोड जॉर्ड है, 121 से सारा जो नल्ला उल्ला था ना, बहुत सारा यूनिवर्स गायब हो चुका है। चंपा वाला वर्ल्ड गायब हो चुका है, फिर वो जो वो लव वाला था वो भी गायब हो चुका है। अब से डीसी मेरा कैरेक्टर खत्म। आप पुल करो जिए अलमित अपना से बेस्ट कैरेक्टर ढेक का पुल कर लेना। ठीक है, लायोस अल बल गेमिंग निकाले हुए क्वालिटी। बेकार बेकार सब कैरेक्टर को वेलकम यूज़ टू नहीं आ माय रहा है। चैनल। अब वैसा वैसा टीम रखा है कि बीसी साले तुम सेल तुम टैग करना बीसी। एम इवेंट से ठीक है ठीक देखता है, हूँ आज कितन तुमको स्पेशली क्रोमोसोम्स मैसेज भेज मिलता देंगे। है। ठीक है, गोकू गोकू चुपचाप चुपचाप चालू किया है इसलिए इसलिए रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ओ इतना जा बड़ा बहनचोद, देखेगा। सब उसी के पीछे पड़ा है, सारा यूनिवर्स का आदमी उसी के पीछे पड़ा है। छौ छौ को एक के बार में कूद जाता है, ओके जैसे तैसे करके तो 18-17 बचा। एक्साइनो को साव को बकर बेकार बोला बोला तू तो साव एक्साइनो का का कैलेमिटी पीछा दी दूजिए। कैलामिटी का नहीं है, चलो साव है ठीक है। और बहुत सारा तुम कैरेक्टर मिस किया है। रेडेन सोगन पे, रेडेन सोगन है तुम्हारे पास, बिल्ड नहीं किया है। वेपन तुम बिल्ड नहीं किया है, ना ही कैरेक्टर बिल्ड किया है, ना ही साव बिल्ड एवरीवन किया है। हेट्स गोकू। ठीक है, साव ओके बेकार नहीं है, हम भी चलाते हैं, हम भी 33-34 कर देते हैं, खुश है। लेकिन मेरा जितना तुम्हारा ब्लैकलिस्ट पे हम डैमेज देते हैं उतना तुम भी दे देता है। कैलामिटी उतना सारा बफ यूज़ करने के साथ, टीम बफ, ये बफ वो बफ, जो सर दर्द हो जाता है उसका। गोकू बेकार अल्ट्रा गोकू इंस्टिंक्ट जो, बेकार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जोन। अबे जीरेन तक का पहुंच न गया, जीरेन का औकात कहाँ था, कोई नहीं था उसके सामने। गोकुए बेचारा अलग से स्पिरिट बम अपने खा के निकाला है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो होना ना चाहिए कोई लड़ने वाला। ये फ्रीजा बहन चो नल्ला खाली ऊपर से बैठ के तमाशा देख रहा है बहन चैट, हमको तो कोई मार ही नहीं सकता है। अभी देखते हैं, फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेने दो गोकुआ को, तब देखते हैं क्या करता है। फिर से देखते, अरे इस बार फाइट में नहीं बना। जीरेन फुल पावर में अभी तक आया ही नहीं। आया हाई नहीं। पीसी मोबाइल फट जाएगा, पीसी मोबाइल फट फट जा टू जेंसिन से, इसलिए पीसी हया जिए टीबी खेला जिए अच्छा से। सही है, ये भी ठीक है, वेरी नाइस। चलो कोई बात नहीं, आते हैं हम 11 बजे जब डिनर विनर करेंगे। 11 बजे डिनर करेंगे, फिर बैठ के देखेंगे आधा घंटा, एक एपिसोड देख लेंगे 11:30 या 12 बजे तक, फिर स्ट्रीम चालू कर देंगे। तो जिसको आना होगा 11:30 से 12 के बीच में आके देख लेना, डिस्कॉर्ड में ही बैठ के देखते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, आते हैं रात के स्ट्रीम में एकदम अच्छे से। सी यू सून। हाँ अरे तुमको टैग स्पेशली करना। मैसेज कर दिए हैं और हम बाय बैठे रहेंगे, स्पेशली सबको भेज देंगे तो सब बाय अन्नस कर देगा आगे। तो जो लोग डिस्कॉर्ड हो पे देखने ना। वाले वो आ जाना शांति से, बाय बाय ज़्यादा लोग को नहीं रखेंगे क्योंकि आधा आके स्पॉइलर देने लगता है, आधा आके डीलिंगे देने लगता है, इसीलिए। 20 likes OP, थैंक्स फॉर दी लाइक्स लाइक्स। ओपी पीयूष भाई मुझे मैसेज MSC करना। करना। अरे बोल तो दिए 11 से 11:30 बीच में कभी भी आके एक बार डिस्कॉर्ड देख लेना कि हाँ हम है कि नहीं। हम रहेंगे मूवीज वाले में बैठे हुए, देखते रहेंगे, तो आ जाना, सीधा है। ओके चलो बता दिए हैं टाइमिंग, आ जाना। अभी बहुत ओके स्पीड में निकलने वाले हैं, 10 बज गया। अभी आटा सानना है, रोटी बनाना है, बहुत कुछ करना है, इसीलिए चलो बाय बाय।
में सुरमा काला बुला ते लारे नी मुंह पे मुस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी किन्ने आ पिछे लाए ते किन्ने